So hello, good morning, guys. Tomorrow we completed our consolidation. Not completed, we partially completed. We ended on intra-group Post trading. acquisition. Yeah, we'll start from today. Uh, yeah, intra-group trading. What is intra-group trading? Trading between parent and subsidiaries. Yeah. Okay. Types of intra-trading. Parent and say subsidiary may trade with each other, leading to the following potential problems. Current account between payable parent and subsidiary. If parent is selling goods to subsidiary, parent के बुक में अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, सब्सिडियरी Hmm. के बुक में अकाउंट पेबल आ जाएगा, सेम अमाउंट से पे करना है. पेरेंट के बुक में सेल किया तो सेल्स में पीएनएल में शो करेगा सेल्स. सब्सिडियरी के बुक में कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा, परचेज या तो इन्वेंट्री में आ जाएगा, गुड्स होगा तो. ठीक है. So these are the problems which will be facing during consolidation if we have intra group trading. दूसरा हो सकता है लोन्स हेल्ड बाय वन कंपनी इन द अदर. ठीक है. पेरेंट हैज गिवन लोन टू सब्सिडियरी, Hmm. so the interest component is being paid between a single family. Right. Correct. So that we have to eliminate. Dividend, loan interest, same. Unreal dividend also, if the investment which we have made, if we are receiving any dividend for that, we'll be eliminating from our consolidated profits, because we are the single entity. We considering it as a single group, so any intra trading will be eliminating. Okay. Same as unrealized profit. uh, Unrealized profit on sales of inventory. What is unrealized profit on sale of inventory? I mean, ये first point में cover हो गया, but still unrealized profit. Unrealized profit are those profit. For example, I'm parent, you're subsidiary. Hmm. I've sold goods worth 10,000 to you, and you have sold those goods to third party. इसका मतलब 10,000 की goods I sold to you. You have sold to third party. इसका मतलब सब कुछ the entire profits has been realized. You will be selling to third party at a higher profit margin. So the Right. profit margin has been realized. But what if I've sold you goods worth 10,000 and you were only able to sell to third party of goods worth 5,000. इसका मतलब 5,000 goods अभी भी जो मैंने बेचे थे to you are still in your inventory. इसका मतलब those goods के profit are unrealized. ठीक है. करेक्ट. क्योंकि Right. वो तो यू हैव सोल्ड टू थर्ड पार्टी, तो वो तो रियलाइज हो गया. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट विच आई हैव गेन फ्रॉम यू. बट आई विल बी ओनली एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट्स विच इज स्टिल अनरियलाइज. इसका मतलब जिस गुड्स जो गुड्स यू हैव नॉट सोल्ड इट टू थर्ड पार्टी येट. ठीक है. Right. दैट इज नोन एज अनरियलाइज प्रॉफिट. सो एंड देन unrealized profit on sale of non-current assets. Same. If I'm selling you any goods, non-current assets, any asset, और उस पे मैंने प्रॉफिट अर्न किया है, आई विल बी एलिमिनेटिंग in consolidated financial state. ठीक है. Right. And what is the logic why we are eliminating? Because we have not realized it. इतना जो होल्ड हुआ ही नहीं है तो फिर प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे. That is one logic, but एक और लॉजिक है. प्रॉफिट इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि वी आर वन एंटिटी नाउ. Right. अब एक एंटिटी दूसरे एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट से पैसा कमा रहे हैं, हाउ? तो क्या मतलब हुआ? आई मीन, Hmm. Hmm. इफ फॉर एग्जांपल आई I purchase, being a parent, I purchase goods at a cost of 100. I sold it to you at 120. So although I've earned you profit from you 20 of 20 rupees, but still consolidated में तो your expense is also mine expense ना. Hmm. तो एक ही बात हुई कि I am already earning, but your at the expense of yours, मेरा भी तो expense हो ही रहा है ना. Right. So mine profit is plus, but your profit is in minus. So there is no nil हो गया ना. Plus 20 minus 20 is a nil. There is no impact, right? Hmm.
we are one single entity, so there is no point of recording intra-group transaction in books. सेल्स होगा तो भी हम सेल्स रिमूव करेंगे उसमें से. फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स किया तो मेरे सेल में कहीं ना कहीं $100 का गुड्स आ रहा होगा, सोल्ड टू सब्सिडियरी. एंड बीइंग यू आर द सब्सिडियरी, आप आपके परचेज में आ रहा होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम पेरेंट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 120. So that would be sold. That would be eliminated basically. Correct, right? Right. Current account. What are current accounts? Accounts payable and account receivables. ठीक है. If parent and subsidiary trade with each other, then this is will probably done on credit. ठीक है. Credit means on credit, it's not cash transaction. Note that in that case, intra-group transactions are usually recorded within a single account in each entity. Correct. Standalone statement में show करेगा sale to subsidiary, purchase from parent. ठीक है. In purchase and for parent, it I will be showing in my sales. ठीक है. Right. तो सिंगल अकाउंट में तो शो होगा, बट सिंगल अकाउंट में क्या शो होगा? दिस विल लीड टू अकाउंट रिसीवेबल in one entity statement of financial position and accounts payable in another entity statement of financial position. मेरे में अकाउंट रिसीवेबल होगा from subsidiary, and your financial statement it will be shown accounts payable to parent. Correct. So these are amounts owing within the group rather than outside the group. These are the amount owing within the group rather than outside the group. Therefore, they must not appear in consolidated financial statement. You understood, right? Hmm. They are therefore cancelled against each other on consolidation by deducting from the relevant line of statement of financial position. We'll be eliminating the transaction. ठीक है. Right. First, at the year end, cash in transit and goods in transit. At the year end, the current accounts may not agree. Why? Because of cash in transit and goods in transit. I'll give you an example. Stand alone बैलेंस शीट. ये पेरेंट की है, ये है सब्सिडियरी की. मेरे में अकाउंट रिसीवेबल शो हो रहा है ऑफ 8,000, लेट्स से 5,000, and in your books AP accounts payable is showing 4,000. Why 4,000? Because at the year end you have paid me money, me money of 1,000, but I have not received it yet because of any issue in transaction delay हो गया कुछ. इसका मतलब कैश इन ट्रांजिट. तो इसकी वजह से यू हैव रिड्यूस फ्रॉम योर एपी बिकॉज यू हैव पेड 1,000. करेक्ट. एंड बीइंग in my books I haven't received it yet. I'll still continue show AR at 5,000. So what I'll assume, when there is a cash in transit, because we are a one group now, अगर कैश आया भी तो ग्रुप के पास ही आएगा. करेक्ट. एक एंटिटी से हटके दूसरे एंटिटी में आया, बट है तो एक ग्रुप ही ना. Right. ठीक है. तो what I'll do, I'll assume that I've received the cash. I've assumed that I have received the cash. तो क्या एंट्री होगी मेरे बुक्स में? डेबिट कैश, क्रेडिट AR. ठीक है. तो मैं मेरे बुक्स में अज्यूम कर लूंगा कि आई रिसीव द कैश. इसका मतलब मेरे बुक्स में मैं AR को 1,000 से माइनस कर दूंगा बिकॉज आई अज्यूम कि मेरे को मिल गया हुआ है. कैश मेरा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1,000 से, क्योंकि कैश मेरे को मिल गया. ठीक है. अब जैसे ही ये मैंने एंट्री पास करी, डेबिट कैश क्रेडिट AR, मेरा अकाउंट रिसीवेबल और AP मैच हो गया विद योर बुक्स. ठीक है. बस जैसे ही मैच हुआ, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एलिमिनेट AR एंड AP. करेक्ट, राइट? in consolidated, because this is from same group, मतलब. हाँ. Correct. If somebody asks you what is the family income and you say that I owe from my father 5,000 and my father owes me, my father has to pay me 4,000 yet, 5,000. So technically there is no income because
you have to receive and your father has to pay, but from a family point of view there is no income. It's just Hmm. that inflow outflow. Right. Money is being changed from one pocket to another. Correct. But the pocket is same. Yeah, pocket is same from a whole family point of view, from a group Hmm. point of view. ठीक है, तो in consolidation we'll be removing AR intercompany balances, so -4,000, -4,000, so this will be the transaction. तो मेरा Right. ARAP नेट हो गया. ठीक है. Hmm. सेम एज गुड्स. फॉर एग्जाम्पल आई सोल्ड यू गुड्स वर्थ 5,000, तो इसका मतलब मेरे बुक्स में इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी. Hmm. That's the same. करेक्ट. एंड योर बुक्स में इन्वेंट्री विल बी यू हैवंट रिसीव्ड द इन्वेंट्री, इसका मतलब इन्वेंट्री इज इन ट्रांजिट. ठीक है. तो हम हाँ. क्या एंट्री पास करेंगे, व्हाट विल डू, विल अज्यूम दैट वी हैव रिसीव्ड द इन्वेंट्री, सेम एज कैश, वी अज्यूम विल रिसीव द इन्वेंट्री, डेबिट इन्वेंट्री, वी हैव आई हैव रिसीव्ड द इन्वेंट्री, क्रेडिट वुड बी पेएबल. Hmm. ठीक है. जैसे आई पास द एंट्री, जो भी मेरा ARAP में बचा होगा बैलेंस, वो मैं माइनस कर दूंगा इंटर कंपनी का, क्योंकि अब एक तो मेन मेन लॉजिक क्या है, व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस, टू रिकंसाइल AR एंड AP. Right. क्योंकि इस डिफरेंस आ रहा था 5,000 और 4,000 बिकॉज ऑफ हाँ. कैश इन ट्रांजिट और इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, कुछ भी हो सकता है. Hmm. ठीक है. अगर पहले एग्जांपल में चलना है तो इट कुड बी द केस की आई हैव ट्रांसफर्ड यू इन्वेंट्री बट आई हैव नॉट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट येट. तो मेरे में AR बड़ा होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आई हैव ट्रांसफर्ड द इन्वेंट्री, तो माय बुक आई विल शो इन माय बुक दैट आई हैव ट्रांसफर्ड द इन्वेंट्री टू सब्सिडियरी, इसका मतलब एंड द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट. तो मेरे बुक्स में AR प्लस हो जाएगा. हाँ. इन योर बुक्स you have not received the inventory. So your Right. books में you won't be showing in payable, that payable to parent this much amount. But once I'm assuming that receive the inventory, इसका मतलब I'll continue to show, I'll start continue being an subsidiary, you will continue to show in your AP that I have to pay this much to parent. But in Okay. consolidation, what will happen? All this will be eliminated because inventory has been transferred from one group to another entity within the same group. So there is no actual transfer of inventory. Correct, right? Hmm. ठीक है. So what we will actually uh, write down in financial statement? Financial statements कुछ नहीं. ये I'll show you what this will understand with the example. You understood the logic, right? क्यों Yeah, yeah. eliminate कर रहे हैं और Hmm. क्या point of view से eliminate कर रहे हैं और क्या हाँ. assume कर रहे हैं. Hmm. assume इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें reconcile करना है. Hmm. और although अगर नहीं भी आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं तो कहता हूँ कैश इन ट्रांसिट है और ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गया, सेम बैंक अकाउंट में वापस पैसा आ गया, पर फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू तो पैसा तो वही है ना, कहीं गया थोड़ी है आउटसाइड द ग्रुप. हाँ. यू आर गेटिंग राइट क्या हो रहा है. Yeah. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कि व्हाई आई मीन कैश कहीं पे जा रहा है. देयर इज ओनली प्लस माइनस विद इन द सेम ग्रुप. तो देयर इज, so from a group point of view there is no actual plus minus. Hmm. यू गेटिंग राइट. Yes. स्टैंड से पता लग रहा है कि अच्छा ARAP आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. बट फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई से कि ये सेम ग्रुप है, तो क्या मतलब है. इट्स जस्ट अ ट्रांसफर बिटवीन टू पॉकेट्स ऑफ सेम पैंट, राइट. Right. कैन यू come on page number 450, illustration 5. Yes. We have been given two companies standalone financial statement, Plant and Sherb. Year end is 31st March 2007. PP investment in cost, inventory, trade receivable, cash has been given, equity has been given, total liability and etc etc. ठीक है. Notes. Plant acquired 80,000 shares in Sherb in 20x1 when Sherb reserves included a share premium of 30,000 and retained earning of 5,000. ठीक Hmm. है. On at the day of acquisition की बात हो रही है. Plants record, plants के books में 6,000 owing to Sherb, but Sherb record shows
8,000 ओड बाई प्लांट। ठीक है। Yes. इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के बुक में ओइंग टू शर्ब, इसका मतलब प्लांट के बुक में एपी शो कर रहा है, अकाउंट्स पेबल। बट हाँ. शर्ब के बुक्स में ओड बाई प्लांट स्टिल एआर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या कि प्लांट ने पैसा दे दिया होगा, बट शर्ब को अभी मिला नहीं है, इसलिए वो 8,000 पे शो कर रहा है। और कैश इन ट्रांजिट कितना हुआ? 2,000। Hmm. ये केस हो सकता है ना कि मैंने, बीइंग आई एम प्लांट एंड यू आर श्योर, आई हैव ट्रांसफर्ड यू मनी, बट यू हैवंट रिसीव्ड इट बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल रीजन, एनी रीजन, बिकॉज एंड ड्यू टू विच कैश वाज इन ट्रांसिट, पेमेंट वाज इन ट्रांसिट। So because you haven't received, you will still continue to show AR from me, and in my book I've paid you, I will reduce from my AP, accounts payable, of Right. 2,000. ठीक है। Okay. No impairment of goodwill occurred till date। ठीक है, impairment भी sorted है। Plant uses proportion of net asset method to value the non controlling interest। इसका मतलब गुडविल फुल होगा कि पार्शियल होगा? आई मीन ओनर्स गुडविल होगा कि गुडविल ओनर्स और एनसीआई दोनों का होगा? Only owners. करेक्ट। ठीक है। How much share capital Sherb has? 10,000, 100, right? हाँ. And out of 100. 100 we plant acquired 80,000, इसका मतलब 80% एक्वायर कर लिया। हाँ. Okay. On first, on 20x1, when Sherb, when Sherb reserves were, शेयर प्रीमियम 30,000 था और रिटर्न अर्निंग 5,000 की थी। बैलेंस शीट डेट कहाँ तक की दी हुई? 31 मार्च 20x7, मतलब 6 साल पहले हमने एक्वायर किया था। यू गेटिंग? हाँ. X1, X7. ठीक है। Right. तो तब का रिजर्व दिया हुआ है, तो तब तब का रिजर्व, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन रिजर्व प्लस डेट ऑफ रिपोर्टिंग रिजर्व माइनस जितना भी होगा वो क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, मतलब छह हाँ. साल का रिजर्व। Yes. और वो 80% और 20% में बाइफरकेट Divide होगा। होगा. चलो, हाँ. ठीक है, डन डन। So let's, I'm not solving entire question. Let's go with the solution. Okay. Let's do one thing. You calculate goodwill. Just बाकी सब तो प्लस प्लस ही करना है। I want you to calculate goodwill without seeing the actual answer. Based upon this uh, question, just give me the amount of goodwill. Okay. Yeah. 1 minute. You have purchase consideration, you have net assets, just you have to minus it. Yeah.
Done. Yeah, What is the amount of goodwill? 72. Perfect. 180 is the purchase consideration. Mm-hmm. Then we have net assets, which is 135. Mm-hmm. That will include share capital of 100, share Mm-hmm. premium of 30, Mm-hmm. and retained earnings of 5,000. And NCI at acquisition is the total of net assets ka 20%, Perfect. which is 27. Just one question. Hmm. If in this question revaluation surplus would have been given, would you have taken account in while calculating goodwill from net asset point of? Evaluation surplus. Yes. No, Yes, you will be doing that because it's a part of equity, right? but in the end, we transfer revaluation surplus into retained earnings. Huh? नहीं नहीं, So when are we doing? No, there is no transfer of revaluation surplus to retain earning. Revaluation surplus हमेशा retain earning के नीचे दिखेगा. I mean below retain earning as a separate head. Revaluation surplus. तो वो इक्विटी का पार्ट ही है. तो we'll be hmm, taking into account while calculating goodwill. right. ठीक है. If you see the pro forma of net assets, uh, calculation negative, yeah. Net assets of subsidiary. Share capital in reserves. We have three: share premium, retain earning, and revaluation surplus. ठीक है. आई मीन लॉजिक वही है. एट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर एग्जांपल 10 था, रिपोर्टिंग डेट पे 12 हो गया, इसका मतलब समवेयर पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन सरप्लस इज 2. तो वही बाइफरकेट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग. ठीक है. ठीक है. सो इन कंसोलिडेशन व्हाट, जस्ट you are going to calculate, don't prepare pro forma, just give me the total amount. ठीक है. In consolidation what will be the total amount for pp? As we have purchased Sharp, then his asset is mine asset. 100 plus 140, Correct. 240. Then investment in asset cost आएगा. नहीं, वो किसमें बाइफरकेट होगा goodwill and net assets. और कैसे होगा, we know, right? Yes. तो इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद क्या आएगा? Uh, Current assets. गुडविल. Goodwill. गुडविल 72. Yes. देन करंट एसेट व्हाट? Then we have inventory, हम्म. trade receivables. एंड कैश. Cash. But trade receivable में ओके. adjustment आएगा. करेक्ट. और क्यों एडजस्टमेंट आएगा, विल बी नोइंग. प्लांट Hmm. रिकॉर्ड शोज 6000 owing to श्योर. ठीक है. बट उसके बुक्स में एपी दिख रहा है, प्लांट्स के बुक में accounts payable owing to Sure, but Sure's record shows 8000 owed by plant. इसका मतलब Sure के बुक में account receivable शो हो रहा है of 8000. Hmm. The difference is explained as cash in transit. तो इसका मतलब Right. based upon what I've explained, you will be assuming that we have received the cash. Basically, Sure has received the cash. तो एंट्री क्या बनेगी? डेबिट कैश क्रेडिट AR. Hmm. ठीक है. तो श्योर के बुक में AR क्या हो जाएगा अब? Come. कम, क्योंकि उसको 2000 मिल गया. Hmm. Same. So if you go into at the if you see answer, cash has been added plus 2 as CIT cash in transit.
accounts receivable has been deducted by 2 because now a I mean कम हो रहा है, हाँ। उसको मिल गया पैसा, शर्प हम्म। को। ठीक है। हम्म। बस अब जैसे रिकनसाइल हो गया ए आर ए पी अब 6,000 आ गया। नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ शोइंग डिफरेंट डिफरेंट ए आर ए पी, बिकॉज एक ग्रुप की बात है, प्लस एक ग्रुप से लेना और क्या एक ग्रुप से पैसा देना, हम्म। एक ही बात है ना, तो माइनस कर दो 6 6। इफ यू सी ए आर अगेन in AR 6 has been deducted as intercompany, and in current liability AP 6 has been reduced. ये सिक्स का मेरे को समझ में नहीं आया। क्या लिखा हुआ है? Plant record shows 6,000 owing to Sherb, but Sherb record shows 8,000 owed by plant. हाँ। जैसे ही हम मानेंगे कि शर्प को पैसा मिल चुका है ऑफ 2,000 फ्रॉम प्लांट, इसका मतलब वो हम्म। अपना एपी ए आर कम कर देगा रिसीवेबल हम्म। से। ऑब्वियसली हम पैसा मिल गया, वो हमने हाँ। किया, प्लस कैश कर दिया, क्योंकि कंसोलिडेशन भी हम प्लस ही कर रहे हैं ना, अभी अज्यूम कि शर्प को मिल गया तो उसका कैश भी हमारा ही कैश हो गया, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं कैश को। और एआर हम कम कर रहे हैं क्योंकि शर्प का एआर अब कम हो चुका है बाई हाँ। 2,000, तो माइनस हो हाँ। गया। हाँ। अब शर्प का एआर कहाँ स्टैंड हो रहा है? एट 6,000। प्लांट का भी 6,000। जस्ट सेकंड। हेलो। यस। या, तो अब शर्प के बुक में एआर एट 6,000 विल बी स्टैंडिंग, हम्म। प्लांट के बुक्स में एपी विल बी स्टैंडिंग एट 6,000। वी रिकनसाइल हो गया। बस अब एक बीइंग अ ग्रुप, फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू, एक को पैसा देना है, एक को लेना है। क्या मतलब है? करेक्ट, राइट? हाँ, 2000 का मेरे को समझ में आ गया। हम्म। ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है, दैट्स व्हाई वी डिडक्टेड इट, और कैश मिल गया अज्यूम कर रहे हैं, हम्म। तो कैश में प्लस कर दिया। बट ये जो माइनस ट्रेड रिसीवेबल में -6 जो क्योंकि किया है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है ना, ये तो इंटर कंपनी वुड बी रिड्यूस, ओके, सो विल बी व्हाट डिडक्टेड। अबाउट 8000 देन? अरे वो तो हमने मान लिया ना कि वी हैव रिसीव द कैश, तो एक जगह से कैश गया, एक को मिल भी गया, तो फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू तो कैश एक जगह से जाके दूसरे में लिया, तो कैश तो उतना ही रहा ना, कोई इंटर कंपनी कहाँ हुआ? अब वो कैश ग्रुप का ही है ना। ओके। पर प्लांट और शर्ब 6,000 स्टैंड कर रहे हैं। अब बीइंग एन इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन, एक को पैसा देना है, एक को लेना है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड शोइंग इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द ग्रुप नहीं है, अंदर अंदर ही है, तो वो क्यों करेंगे रिकॉर्ड? वी हैव टू पॉकेट्स इन अ पैंट, ठीक है? एक पॉकेट में 6,000 थे, एक पॉकेट में 8,000 थे। ठीक है। अगर एक को देना है तो फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ पैंट आई मीन, फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ही मतलब है? आई मीन कुछ एडिशनल कैश तो आ नहीं रहा ना कोई पॉकेट में कि हम उसको ऐड करेंगे। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ गई। क्या समझे? व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट डू अंडरस्टैंड? 6000 उसको देना था, एंड 8000 वी अज्यूम दैट यू आर सपोज टू रिसीव। हम्म। सो 8000 हम अज्यूम कर रहे हैं कि मिल गया, 2000 का डिफरेंस आ रहा है जो हमने हम्म। ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर दिया और कैश में से प्लस कर दिया। हम्म। और जो 6000 जो पेएबल थे, उसको इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन समझ के दोनों में से डिडक्ट कर दिया, ट्रेड समझा नहीं है। रिसीवेबल एंड इट्स करंट अ लायबिलिटी। कंप्लीट, इट्स इट्स एक्सप्लिसिट, क्वेश्चन इज एक्सप्लिसिटली सेइंग कि इट्स अ इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन।
हम्म। क्वेश्चन ही कह रहा है प्लांट इज ओइंग टू शर्ब एंड शर्ब, शर्ब के बुक में 8,000 इज ओड बाय प्लांट, तो राइट। इट इज इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन. हम्म। अंडरस्टूड अंडरस्टूड. बस वही करना है. इन्वेंट्री वुड बी प्लस प्लस, trade receivable में cash in transit got deducted, intercompany got reduced, cash has been added by 2, current liability has been reduced by 6, intercompany transaction. The rest everything is same. Share capital and share premium will be same. Retain earning में क्या adjustment होगा, उसके post acquisition का profit हमारा share, हम हमारे share का will be adding. At acquisition हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 10,000, 100,000, 30,000 और 5,000 था at the day of acquisition. रिपोर्टिंग डेट पे हमें बैलेंस शीट देख के पता लग रहा है कि शेयर कैपिटल इज सेम बट शेयर प्रीमियम भी 30 है, सेम ही है. रिटेन अर्निंग हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 to 20. इसका मतलब कहीं ना कहीं 15 इज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. तो 15 इंटू 80% इज आर शेयर. ठीक है. हम्म. तो 12 वुड बी आर्स, तो 40 हमारा खुद का प्लस 12 सब्सिडियरी का, टोटल विल बी 52. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम फेयर नेट एसेट के प्रोपोर्शन बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे थे एट द डे ऑफ एक्विजिशन. जो नेट एसेट की कॉस्ट आई दैट वाज 27,000. पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आउट ऑफ 15, 20% इज कंट्रोल्ड बाय एनसीआई, तो उसका 20% वुड बी 3. 27 प्लस 3 इज इक्वल 30. ठीक है. राइट. डन. नाउ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स. रियलाइज्ड प्रॉफिट वी वोंट बी रिड्यूसिंग बट अनरियलाइज रिड्यूस करेंगे क्योंकि वो अभी भी इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन ही है, वो ग्रुप से बाहर नहीं गया ट्रांजैक्शन अभी भी. करेक्ट. रियलाइज कैसे हो जाएगा, मैंने कुछ गुड्स ट्रांसफर किए, यू हैव सोल्ड द एंटायर गुड्स टू थर्ड पार्टी. इसका मतलब वो गुड्स अभी बुक्स में है ही नहीं अपने, बीइंग अ ग्रुप, वो गुड्स अपने बुक में है ही नहीं, सोल्ड हो चुके थर्ड पार्टी का. इसका मतलब देयर इज नो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन. बट अगर हमारे बुक्स में शो कर रहा है तो उतने पोर्शन का अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली हायर प्राइस पे सेल किया होगा. तो जितने गुड्स अभी भी एट द रिपोर्टिंग डेट इज हेल्ड बाय सब्सिडियरी, उसका अनरियलाइज प्रॉफिट मैं रिड्यूस करूंगा फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट. ओके. बिकॉज लॉजिक इज व्हाट, आई कैनॉट अर्न प्रॉफिट from a same company in the same group. Basically, I हम्म. cannot earn profit from a same family. Same राइट. same logic. ठीक है. Profit made. Let's read the theory. Profit made by entities within a group on transaction with other group companies are recognized in account of individual entities concerned. ठीक है. Individual में will be recording, but in terms of a group as a whole, such profits are unrealized and must be eliminated from consolidated financial statement. Unrealized कैसे हो सकते हैं? Inventories where entity trade with another, या तो नॉन करंट एसेट बीन ट्रांसफर फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर, ये अनरियलाइज प्रॉफिट हो सकता है. हम्म. मेरे बुक्स में नॉन करंट एसेट वाज स्टैंडिंग एट 8,000, आई सोल्ड दैट एसेट टू यू एट 10,000, 2,000 को मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो दैट वी हैव हाँ. टू एलिमिनेट. ठीक है. where one entity sells goods to another, a number of adjustment may be incurred. हाउ. पहले तो अगर मैंने इन्वेंट्री ट्रांसफर किया ऑन क्रेडिट, इसका मतलब इन्वेंट्री तो मेरे बुक से चला गया, एंड योर हम्म. इन्वेंट्री इन योर बुक्स इन्वेंट्री गॉट एडेड. दूसरा, मेरे बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल शो करेगा एंड योर बुक्स अकाउंट पेएबल शो करेगा.
मेरे बुक्स में इन प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे बुक्स में सेल्स शो करेगा, सेल्स में, सेल्स कंपोनेंट में सेल्स टू सब्सिडियरी भी आएगा इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट। एंड इन राइट। परचेज, इन फ्रॉम फ्रॉम सब्सिडियरी पॉइंट ऑफ व्यू वो परचेज में शो करेगा। उसके ऑब्वियसली ना, परचेज, कोई भी आइटम परचेज में जाएगी। तो हम्म। 6 ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, ठीक है। ये सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम P&L हम सेल्स पूरा हटा देंगे, परचेज भी पूरा हटा देंगे इन कंसोलिडेटेड, सेम अमाउंट का, ठीक है। इन फ्रॉम प्रॉफिट्स पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या करेंगे? अब इन्वेंट्री जो माइनस हुई है मेरे बुक से और आपके बुक में प्लस हुई है फ्रॉम इन्वेंट इन सब्सिडीज बुक, तो माइनस हो गया प्लस हो गया, तो वो वो रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे तो वो उसका टोटल सेम ही होएगा। बट का डिफरेंस कहाँ आएगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे बुक में वो इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 100, बट आई सोल्ड इट टू यू एट 120। इसका मतलब इन योर बुक दैट इन्वेंट्री विल बी अकाउंटेड एज 120, क्योंकि फॉर बीइंग अ सब्सिडियरी, फॉर यू इन्वेंट्री कॉस्टेड यू 120, करेक्ट। हम्म। तो मुझे वो 20 का पोर्शन जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया है वो रिमूव करना है, प्रॉफिट एलिमेंट, करेक्ट। और प्रॉफिट एलिमेंट में कैसे रिमूव करूंगा? जितने के गुड्स यू आर स्टिल होल्डिंग एट द रिपोर्टिंग डेट, उतना एल बी उतने के प्रॉफिट एल बी रिड्यूसिंग फ्रॉम इन्वेंट्री। उसकी एंट्री क्या होगी? बेसिकली मुझे, मेरा लॉजिक क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि आप इन सब्सिडियरी बुक इन्वेंट्री भी शो करे एट कॉस्ट ऑफ 100, 120 पे शो नहीं करना है, क्योंकि इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन की वजह से इन्वेंट्री इज गेटिंग ओवरस्टेटेड। यू गेटिंग 100 की हाँ। इन्वेंट्री, ग्रुप सेम ही है, बट सेम इन्वेंट्री डिफरेंट 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 कॉस्ट पे शो कर रही है, विच इज नॉट राइट, हम्म। हम्म। ठीक है। तो मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट शो करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 के गुड्स ट्रांसफर टू यू एट 120 एंड यू आर स्टिल होल्डिंग दोज गुड्स एट रिपोर्टिंग डेट, इसका मतलब पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड है, क्योंकि you also haven't sold the goods of worth 120 to another party, ठीक है। तो दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। हम्म। रियलाइज कब होगा? इफ यू हैव सोल्ड, तो सारा रियलाइज हो जाएगा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ आई मीन रिड्यूसिंग प्रॉफिट, क्योंकि वो इन्वेंट्री भी यू हैव सोल्ड, तो वो बुक से ही बाहर चली गई, क्योंकि ग्रुप से बाहर यू हैव सोल्ड टू थर्ड पार्टी, इसका मतलब वो इन्वेंट्री ग्रुप से बाहर चली गई, करेक्ट। या। तो मेरा कंसर्न ही नहीं रहा कि मेरा इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है कि नहीं, क्योंकि वो इन्वेंट्री ग्रुप से बाहर चली गई है। यू गेटिंग? हम्म। करेक्ट, राइट। यस। फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न मेरा कहाँ आ रहा है? 100 और 120 में कंसर्न आ रहा है, और 120 अगर ग्रुप से बाहर चला गया, आई मीन सोल्ड हो गया, तो मेरा कंसर्न ही नहीं है। बट 120 में से 60 ग्रुप से बाहर गया हुआ, 60 अभी भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब 50% मेरा प्रॉफिट अभी भी उस एंटिटी, आई मीन अनरियलाइज्ड है फ्रॉम अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन सब्सिडियरी, हम्म। करेक्ट, राइट। या। 120, 100 के गुड थे, 120 पे। 120 पे सेल किया, एंड यू आर हाँ। स्टिल होल्डिंग 60। गुड्स 60, हाँ। 60 सोल्ड इन द मार्केट, इसका मतलब, और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 20। तो इसका मैं 50% करूंगा, 10। 10 इज माई वॉट? अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज URP, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिड्यूस करूंगा, कैसे करूंगा? आई टेल यू। डेबिट मेरा क्या हो जाएगा? RE। अगर मैं फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूँ तो, तब इसलिए मैं रिटेन अर्निंग कर रहा हूँ। अगर मैं P&L की बात करूँ तो मैं सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज कर दूंगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्यों इंक्रीज करूंगा? क्योंकि यू नो हाउ GP इज कैलकुलेटेड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जैसे ही मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करूंगा, इसका मतलब मेरा कॉस्ट बढ़ गया, ऑटोमेटिकली GP मेरा कम हो जाएगा, यू गेटिंग? हाँ। हाँ। इसलिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस कर रहा हूँ। मेरे को क्या करना है, मुझे मेरा प्रॉफिट कम करना है, इसलिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही बढ़ा दे रहा हूँ, जिससे मेरा GP कम हो जाए। ओके। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूँ, तो वो जो नेट प्रॉफिट आएगा ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग में गया, और रिटेन अर्निंग में मैं ऑलरेडी माइनस कर ही रहा हूँ, तो एक ही बात है। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी एडजस्ट है, तो फिर रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं लिखूंगा ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट व्हाट इन्वेंट्री, 10, 10 और 10। तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट कम हो गया, और मेरा इन्वेंट्री भी जो 10 से शो कर रहा था,
बेसिकली इस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए, राइट? क्योंकि 50% गुड्स मैंने सेल कर दिए थर्ड पार्टी को, हम्म। सब्सिडियरी। ठीक है। तो इन योर बुक 50% सेल कर दिए, तो कॉस्ट तो अभी भी 60 की बुक्स में शो कर रही है, बट मुझे पता है कि उसकी कॉस्ट एक्चुअल क्या है। करेक्ट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50% सेल कर दिया हुआ है, तो एक्चुअल में इसका कॉस्ट क्या है? 50 था ना मेरे, फ्रॉम अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो 10 क्या है? प्रॉफिट है। तो जैसे ही मैं, अगर मैंने 10 का रियल माइनस किया, 10 का अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस किया एंट्री, तो क्रेडिट इन्वेंट्री हो रहा है। तो इसका मतलब इन्वेंट्री भी ये यहाँ से 60 में से -10 हो जाएगा, तो 50 आ गया। 50-50 हो गया बुक्स में, कोई ओवरस्टेटेड नहीं है ना प्रॉफिट। ये लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया, 50 कैसे हुआ? अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर रहे, समझ में आ गया? वाई आर वी माइनसिंग अनरियलाइज हाँ प्रॉफिट? हाँ, 10 वो समझ में आ गया। ठीक है। हम्म। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला सब्सिडियरी, क्वेश्चन में लिखा हुआ सब्सिडियरी हैज सोल्ड 50% ऑफ द ट्रांसफर गुड्स टू थर्ड पार्टी। हम्म। ठीक है। तो टेक्निकली 50%, इसका मतलब 120 इंटू 50% फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाँ। 120 में से 60 यू हैव सोल्ड, 60 अभी बुक्स में शो कर रहा है। हम्म। बट उस 60 की कॉस्ट कितनी है? 50 है ना एक्चुअल में। तो एक्चुअल में तो इसका ही 50% हुआ, यही गुड्स ट्रांसफर हुआ है। हाँ। करेक्ट ना? हाँ। तो मेरे बुक्स में, अगर मेरे बुक्स में होता तो वो 50 पे रिकॉर्ड होता, बट इन योर बुक वही सेम कॉस्ट 60 पे रिकॉर्ड कर रहा है। इसका ओके। मतलब प्रॉफिट मेरा क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट 10 का। हाँ। तो मैंने, अगर मैं इसको रिड्यूस करूं ये एंट्री पास करके, तो मेरा क्या हो जाएगा? -10, 50-50 आ गया, तो कोई इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड नहीं है, और मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया। करेक्ट? नहीं समझ आया? नहीं नहीं, समझ गए, यस। मेरे को बेसिकली, मेरे को ये शो करना है ना, मेरे ग्रुप से मेरे को कोई प्रॉफिट अर्न करना है ना, मेरे ग्रुप से, ग्रुप के ट्रांजैक्शन, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन की वजह से कोई असेट ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेट होना चाहिए। यही लॉजिक से हम इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन रिड्यूस कर रहे हैं। हाँ। अगर कोई लोन भी दिया होता, फॉर एग्जाम्पल आई गिवन यू लोन एट 10%, हम्म। ठीक है, तो इन माई बुक्स लोन शो कर रहा होता 100 का, इन योर बुक्स पेबल वॉज लाइबिलिटी वॉज शोइंग 100 का, और इंटरेस्ट भी यू विल बी पेइंग टू मी 10 का, फॉर एग्जाम्पल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो मेरे बुक्स में इंटरेस्ट अर्न बाय सब्सिडियरी आता होता, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सब्सिडियरी। राइट। बट कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से सेम कंपनी से कैसे यू कैन अर्न? तो इसलिए हाँ, हम लोन भी रिड्यूस करेंगे और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी रिड्यूस करेंगे। टू मैच, राइट। टू मैच मतलब नहीं, एलिमिनेट ही करना है, कोई पॉइंट ही नहीं है फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई ग्रुप में देख, ग्रुप ग्रुप फाइनेंशियल देखेगा, तो क्या देखेगा? ये तो बेसिकली हम हमारे बुक्स में क्या शो कर रहे थे? ट्रांजैक्शन आउटसाइड द ग्रुप ना। हमारा हम्म। हम प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? अगर हम यही करते रहेंगे, तो एक ही ग्रुप से प्लस माइनस हो रहा है, तो प्रॉफिट तो कभी कमा ही नहीं पाएंगे। राइट। जब तक आउटसाइड ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तब तक वी वोंट बी अर्निंग एनीथिंग। तो हम बुक्स में क्या ही शो करते हैं? ट्रांजैक्शन डन, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द ग्रुप। तो ये तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, हमको ये हुआ है, तो स्टैंड अलोन में इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि फ्रॉम स्टैंड अलोन पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर डिफरेंट एंटिटी, बट फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर वन एंड सिंगल एंटिटी, हम्म। इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं। अभी अंडरस्टूड, नॉन गॉट करंट इट। एसेट ट्रांसफर भी करेंगे, अगर मैंने प्रॉफिट पे बेचा है, तो आई बी एलिमिनेट द प्रॉफिट अर्न बाय मी, बीइंग अ पेरेंट। हम्म। इट कुड बी अदर वे अराउंड, सब्सिडियरी भी पेरेंट को सेल कर सकती है कोई इन्वेंट्री। ठीक है? गेटिंग राइट? कुछ भी हो सकता है ना, वाइस वर्सा, कोई भी। यस। बस वही करना है। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट, विदाउट शोइंग द थियरी पार्ट, लेट मी मेक यू क्लियर। अगर हम पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व किसका देखते हैं? सब्सिडियरीज का। हाँ। तो अगर पेरेंट ने बेचा हुआ है, जस्ट लिसन केयरफुली, पेरेंट ने सब्सिडियरी को सेल किया हुआ है, और पेरेंट ने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, क्या वो पोस्ट एक्विजिशन में उसका इम्पैक्ट आएगा? आई मीन रिटेन अर्निंग रिड्यूस करनी पड़ेगी हमें? नहीं। क्यों? बिकॉज
एज यू सेड पोस्ट एक्विजिशन तो हम सब्सिडियरी का कर रहे हैं। और प्रॉफिट अर्न तो पेरेंट ने प्रॉफिट किया है, पेरेंट ने किया है, तो हाँ। पेरेंट के रिटेन अर्निंग में वो शो कर रहा होगा ना, प्रॉफिट। हाँ ओके। हाँ। अगर सेलर क्या सब्सिडियरी ने पेरेंट को सेल किया हुआ है, हम्म। तो पोस्ट एक्विजिशन सब्सिडियरी का है, उसमें 20 का कंपोनेंट इंक्लूड होगा, जैसे इसमें प्रॉफिट, हाँ। प्रॉफिट, तो हम सब्सिडियरी का रिड्यूस करेंगे। तो इसमें क्या एडजस्टमेंट आ जाएगा कि उस 20 में से 80, 80 विल बी, हम पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व देखेंगे ना, पोस्ट एक्विजिशन कितना था, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट हम माइनस करेंगे ऑफ 8, करेक्ट, ओके। आई मीन 2 का। फिर जो बैलेंस आएगा उसको हम प्रोपोर्शन बेसिस पे कर देंगे। बेसिकली अगर सब्सिडियरीज का प्रॉफिट वाज, बेसिकली पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व वाज 100, हाँ। ठीक है, हम यूजुअली क्या करते थे, अगर 80-20 का रेशियो है, तो पेरेंट और एनसीआई, 80। ये बाइफर्केशन था, हाँ। ठीक है। बट अब जब प्रॉफिट इस 100 के अंदर प्रॉफिट शो कर रहा है ऑफ 2, ऑफ सेलिंग टू पेरेंट। या तो हम वो माइनस करेंगे ना, एलिमिनेट करेंगे दोनों में से। एज अ ग्रुप। बेसिकली राइट। हम यहाँ से माइनस करेंगे, पेरेंट में से। पेरेंट में से, एनसीआई में से नहीं करेंगे? एनसीआई में से नहीं करेंगे। क्यों? अरे ये तो सब्सिडी पूरा पूरा पेरेंट का ही पार्ट है ना, पेरेंट को ही हाँ बेचा हुआ है, तो पेरेंट ही हाँ। राइट पेरेंट का ही, राइट राइट तो राइट। सब्सिडियरी के उसमें से क्यों माइनस करेंगे। तो ये 78 हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पे हम 2 माइनस कर रहे थे, तो कि मैच करने के लिए कि कितना बाई, 90 है। 98, ये 98 हो गया, तो ये नाइन। बाइफर्केशन होगा। या। डोंट हाँ। मेक मिस्टेक, अच्छा 9 प्लस -2 आया, 98 किया, अच्छा 98 इंटू 80%, और 98 इंटू 20%, ये हम करते तो क्या लॉजिक था, इसका मतलब हमने 2 भी 80-20 में बाइफर्केट कर दिया, बट था एक्चुअली पेरेंट का, नहीं, वो पेरेंट पूरा रिलेटेड। 100% पेरेंट का ही है। करेक्ट, करेक्ट, तो बस Right, वही करना था। समझ गई। ठीक है, हम्म, तो ये एक एडजस्टमेंट था। अगर पेरेंट ही सेल कर रहे हैं फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं है, पेरेंट में से माइनस कर दो। हाँ। ठीक है, हम माइनस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। करेक्ट 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 करेक्ट, और एक सिंगल एंड सेम एंटिटी है। हाँ। हाँ। नाउ रीड द थियरी। Process to adjust for unrealized profit. First, determine the value of closing inventory held by individual entity. कितनी कितने के वैल्यू के गुड्स अभी भी होल्ड कर रही है सब्सिडियरी एट द रिपोर्टिंग डेट, एट द ईयर एंड, उस पे कितना प्रॉफिट कंपोनेंट था, हम मार्कअप और मार्जिन के हिसाब से विल कैलकुलेट। यू नो मार्कअप मार्जिन कॉन्सेप्ट, राइट, है ना। यस। इफ somebody says you प्रॉफिट इज ऑन मार्कअप, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 + 20 100 + 20, और मार्जिन प्लस है तो 80-20। 80 20। uh, एक और लास्ट पॉइंट नंबर 3, मेक द एडजस्टमेंट, दिस विल डिपेंड ऑन विच एंटिटी इज द सेलर। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, इफ हम्म। सेलर इज द पेरेंट, पेरेंट इज सेलिंग गुड्स टू सब्सिडियरी, द प्रॉफिट एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द पेरेंट्स रिटेन अर्निंग एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप। ठीक है, तो एडजस्टमेंट क्या रहेगा, डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हम्म। रिड्यूस कर देंगे। बट हम्म। अगर अगर सेलर इज द सब्सिडियरी, सॉरी, सेलर इज द सब्सिडियरी, तो जो प्रॉफिट होगा दैट इज in retain earning of subsidiary, correct, the profit element is included in the subsidiary's retain earning, correct, Right. and relates partly to the group and partly to non NCI. So debit retain earning deducted from uh, profit in reporting date, credit would be inventory deducted from the inventory, same logic वही है। हम्म।
ठीक है। यस। लेट्स डू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6। कम टू पेज नंबर 458। Based on the given info, just give me the amount of goodwill. या Yeah, 1 minute। The people are already given. Impairment list. 18 is the goodwill. correct. Okay. When I was explaining you this concept, when seller is a subsidiary, I missed Hmm. one point that अगर उसका post acquisition reserve was 100, 2 was unrealized profit URP, तो इसका मतलब हम उसको उसका प्रॉफिट 100% तो ओन नहीं कर रहे हैं ना, बीइंग अ पेरेंट। ठीक है। तो टू टू विल बी बाइफरकेटेबल। एक्चुअली क्या होगा, बेसिकली 98 इंटू 80% होगा। बिकॉज टू जो प्रॉफिट अनरियलाइज, टू जो प्रॉफिट उसने अर्न किया हुआ है सब्सिडियरी ने, हम उसका सिर्फ 80% ही कंट्रोल कर रहे हैं। करेक्ट। 20% एनसीआई कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसके शेयर में जाएगा, प्रॉफिट अर्न बाय। यू गेटिंग ना? Okay. बेसिकली ये 100 आउट ऑफ 100 वी ओनली ओन 80 एंड 20। हाँ। We made an adjustment by reducing two of unrealized profit in the same entity. We got net 98। अब 98 में से 80 is ours, 20 is of NCI। इसका मतलब हमने टू को भी बाइफरकेट कर दिया बिटवीन 80-20। Okay. ठीक है, बिकॉज इट्स अ सेलर, सब्सिडियरी सेलर। अगर हम 100% ही ओन कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। Yeah. डोंट गेट कंफ्यूज, लॉजिक वही है। हम उसका 100% ओन नहीं कर रहे, 80-20 ओन कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिट आएगा आफ्टर एडजस्टिंग उसका बाइफरकेट करेंगे 80 और 20 में। Hmm. ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Safely transfer goods safely. Here, Health bought 90% of equity share capital 2 years ago. Balance sheet date दिया हुआ 31st December 20x3। तब उसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी, क्वेश्चन में दिया हुआ 5000। ठीक है। एट द डे ऑफ एक्विजिशन बेसिकली 90% एक्वायर किया हमने। बैलेंस शीट देख के पता लग रहा है परचेस कंसिडरेशन वॉज 34,000। ठीक है। रिटेन अर्निंग वॉज 5। अगर मैं आज की रिटेन अर्निंग देखूँ तो 31 हो गया है। इसका मतलब 31 26 वॉज post पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। ठीक है। अभी सिर्फ आई मीन बैलेंस शीट देख के, फिर बैलेंस शीट दी हुई है दोनों की, अमाउंट्स ओके।
Let's read additional information. Safely transferred. Safely is a subsidiary. Subsidiary has transferred goods to Health at the transfer price of 18,000 at a markup of 50%. Can you calculate what is the profit element? हम्म, 6,000 आया। इसका मतलब एक्चुअल कॉस्टिंग वॉज 12,000, 6,000 was profit, total selling price was 8,000, 18,000. Question says two-third of these goods remain in the inventory at the year end. सेफली ने ट्रांसफर किया तो हेल्थ के बुक्स में अभी भी टू थर्ड ऑफ द इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वन थर्ड सेल हो गया, दैट इज रियलाइज्ड। ठीक हाँ। है, तो प्रॉफिट का टू थर्ड कितना होगा, क्योंकि टू थर्ड वर्थ ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड बाई हेल्थ। ठीक है, तो इन टू 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 डिवाइड थर्ड बाई ऑफ थ्री, गुड्स और टू थर्ड ऑफ प्रॉफिट। टू थर्ड ऑफ गुड्स ना। बट हमें प्रॉफिट ही एलिमिनेट करना है ना, हम जैसे ही प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे, 120 का गुड्स था, 20 वॉज प्रॉफिट, हमने जैसे ही प्रॉफिट एडजस्ट किया 50-50 मैच हो गया ना। हाँ। बेसिकली हमें हमें कॉस्ट ओवर इन्वेंट्री हम इसलिए रिड्यूस करना है, हमें ओवर स्टेटमेंट नहीं दिखाना है कॉस्ट का, फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो ग्रुप सेफली के पास भी रहता तो वो 50 के, आई मीन 12,000 के कॉस्ट पे रहता, बट हमने उसको 18,000 पे शो किया हुआ। इसका मतलब अगर उसकी बुक्स देखेंगे तो 80 इंटू 2/3 करेंगे ना, तो अभी भी उसके बुक्स में 12,000 के गुड्स शो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उसका वर्थ कितना है, उसका वर्थ कितना है, दिस इंटू 2/3, 8,000 का वर्थ है। 12,000 का शो कर रहा है। सेफली के बुक्स में 8,000 के गुड्स होते हैं अगर बेचता नहीं तो। हाँ। हेल्थ के बुक्स में 12,000 शो कर रहा है सेम इन्वेंट्री, तो हमें ये प्रॉफिट ही रिड्यूस करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट प्लस माइनस कर देंगे, जैसे प्रॉफिट ये एलिमेंट माइनस कर देंगे, हम्म। डेबिट आर ही कर देंगे, क्रेडिट इन्वेंट्री कर देंगे 4,000 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 8,000 पे 12,000। आ जाएगा। करेक्ट राइट, हम्म। मैच हो गया ना। 8,000 सेफली के बुक्स में भी होता तो 8,000 पे शो करता है, हेल्थ के बुक्स में भी 8,000 शो करता, तो इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड नहीं है, भले ही वो हेल्थ के बुक्स में शो कर रही है, बट भी फ्रॉम अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है। प्रॉफिट भी रियलाइज जो अनरियलाइज प्रॉफिट था सेफली, फ्रॉम सेफली पॉइंट ऑफ व्यू वो भी हम रिड्यूस कर देंगे। हम्म। ठीक है, बस वही करना है। इफ यू सी द if you see the answer, goodwill is 18, you are correct. Profit, property plant and equipment plus inventory 90 plus 20 minus 4, करेक्ट। और वर्किंग क्या है, यही वर्किंग है, समझ लो वर्किंग 4,000। ठीक है, अब रिसीवेबल्स में 110 प्लस 25 माइनस 22, 22 क्यों किया। नीचे और एडजस्टमेंट है, अपन ने रीड नहीं किया। हाँ करेक्ट, द पेबल्स, आई वाज कमिंग टू दैट ओनली, रिसीव इन्वेंटरी सॉल्व किया एडजस्टमेंट। द पेबल एंड रिसीवेबल इन हेल्थ एंड सेफ्टी स्टूड एट 22,000 ऑन दैट डे, तो हम हमारा लॉजिक इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन है, प्लस माइनस कर देना है। हम्म। ठीक है, सॉरी प्लस माइनस नहीं,
एलिमिनेट करना है। तो 22 विल बी एलिमिनेट फ्रॉम ए आर, 22 विल बी एलिमिनेट फ्रॉम एपी। ठीक है। गुडविल सफर्ड इम्पेयरमेंट ऑफ 10,000। ठीक है। बैंक विल बी प्लस, सिंपली कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपली प्लस प्लस। शेयर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग पे आते, रिटेन अर्निंग में पेरेंट का खुद का तो प्रॉफिट है ही है 159 का। 31 में से 26 भी कैलकुलेटेड व्हेन वी वर रीडिंग द क्वेश्चन कि 26 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था। उसमें से 4 का प्रॉफिट वाज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ इन्वेंट्री सेल सोल्ड टू हेल्थ। करेक्ट। 26 was post acquisition हाँ। and 4 is unrealized. हाँ, तो वो भी हमने एलिमिनेट किया डेबिट रिटेन हाँ, अर्निंग करके। तो 22। तो 22 वाज पोस्ट एक्विजिशन। हाँ 22 इंटू 90%, का 22 इंटू 10%। 90%। ठीक है। हाँ राइट। सेम एज एनसीआई, एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे। ओके ओके। गुडविल इंपेयरमेंट हुआ है और एनसीआई हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। क्या ये फुल गुडविल है कि ओनर्स गुडविल ही है सिर्फ? फुल गुडविल है। तो इम्पेयरमेंट जो 10 का हुआ है वो पूरा का पूरा पेरेंट बेयर करेगा या एनसीआई भी बेयर करेगा उसके प्रोपोर्शन पे? एनसीआई भी बेयर करेगा। तो वही करना है। 10 इंटू 90%, 9 विल बी बेयर बाई पेरेंट एंड 1 विल बी बेयर बाई एनसीआई। सो 159, if you talk about group reserve, 159 उसका 100%, 100% ऑफ हेल्थ हेल्थ रिटेन अर्निंग, राइट? हम्म। प्लस 22 का 90% 19.8, और इम्पेयरमेंट भी बेयर करेगा 90% ऑफ 10। हम्म। ठीक है। सेम एज इन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एट द डे ऑफ एक्विजिशन 4 था, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 22 इंटू 10%, 2.2। एनसीआई शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट 10%, 5.2 इज द क्लोजिंग बैलेंस। सेम मैचिंग। ठीक है। नॉन राइट। कंट्रोलिंग, नॉन करंट लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपली प्लस प्लस। बट करंट लायबिलिटी वी हैव एडजस्टमेंट ऑफ इंटरकंपनी रिसीवेबल पेएबल ऑफ 22,000। We have eliminated by reducing from AR and AP. डन। Done? या। Understood, right? या। Okay. It's 12:45. Let's take a break of 5 minutes. We'll continue with 5 minutes and continue. We'll proceed with non-current assets. ओके। Okay?
हेलो। हेलो। या सो लेट्स स्टार्ट विद नॉन करंट असेट्स, ट्रांसफर ऑफ नॉन करंट असेट्स। जस्ट अ सेकंड। या। या सो non current assets, if one group entity sells non current asset to another group, sorry, another entity, adjustment must be made to create the situation that would have existed if this sale had not occurred. इसका मतलब क्या होता? देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्रॉफिट ऑन द सेल। अगर हम हमें वो सिचुएशन कंसिडर करके चलनी कि अगर सेल नहीं होती तो क्या होता, तो प्रॉफिट नहीं होता, सेल नहीं होता हम्म। तो डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज होता, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे होता रादर देन दी न्यू कॉस्ट। कैसे? क्योंकि आई गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल 10,000 का गुड्स था, लेट्स टेक एग्जांपल पीपी, ठीक है, ये पेरेंट था, सब्सिडियरीज था, ठीक है। मैंने उसको 3 साल यूज किया बिंग अ पेरेंट, ठीक है। 2,000 एनुअल डेप्रिसिएशन लगा, 6,000 ऑलरेडी लग चुका है इस पर। तो मेरा कैरिंग और मेरे बुक्स में 4,000 पे शो कर रहा था। फ्रॉम 4,000 आई ट्रांसफर टू सब्सिडियरी एट अ कॉस्ट ऑफ 6,000 लेट्स से, तो दिस प्लस 2,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? ठीक है। अब जो सब्सिडियरी चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन वो 6,000 पे करेगा, राइट हम्म। राइट, उसके लिए तो ये कॉस्ट है सिक्स हम्म। थाउजेंड यूजफुल लाइफ वॉज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 ईयर्स, ठीक है। 3 साल तो यहीं पे यूटिलाइज हो चुका है, 2 ईयर 2 साल बचे हुए हैं, तो दिस डिवाइड बाई 2, उसके लिए तो ये कॉस्ट है, न्यू कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन आ रहा है 3,000 का, राइट। करेक्ट। तो इन कंसोलिडेशन वी हैव टू एलिमिनेट ऑल profits and in difference in depreciation amount, बिकॉज टेक्निकली इफ यू सी एक ही ग्रुप की बात है, अगर जो ट्रांसफर हुआ है उसकी वजह से प्रॉफिट इनकर हो रहा है, डेप्रिसिएशन अमाउंट भी बढ़ जा रहा है। हम्म। टेक्निकली 2,000 एनुअल लगना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दैट 3,000 लग रहा है, विच इज रॉन्ग। राइट। आउटसाइड द ग्रुप हुआ नहीं है, सेम ही एंटिटी है, सेम ही एंटिटी में प्रॉफिट भी कमा लिया है, डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज करे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स भी सेव हो जाएगा। कितना दिमाग हम्म। लगा रहे हो? स्टैंडर्ड सिंग नो, इट्स नॉट अलाउड, यू हैव टू एलिमिनेट ऑल दिस। तो एलिमिनेट क्या करना है? दिस ट्रांसफर एंड कैरिंग अमाउंट, दिस वॉज द स्टैंडर्ड। कंसोलिडेशन में आपको 4,000 से और 1,000 से डिफरेंस एडजस्ट करना है।
ठीक है। और नेट कितना हो रहा है दिस। 4,000 is profit, 3,000 is depreciation. 4,000 इज नॉट प्रॉफिट। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, रीड। स्टैंडर्ड इज सेइंग कैरिंग अमाउंट एट द डे ऑफ ट्रांसफर कितना था, 10,000। विदाउट ट्रांसफर कितना होता, विद ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफर, और प्रॉफिट एडजस्टमेंट। ठीक है। हम्म। डेप्रिसिएशन एज रिपोर्टिंग डेट कितना था, विदाउट ट्रांसफर कितना होता, एडजस्टमेंट कितना आएगा, बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट में। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, क्यों क्यों ये कर रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक। वी आर अज्यूमिंग कि व्हाट विल हैपन इफ द ट्रांजैक्शन नॉट वुड हैव अकर्ड। ठीक है, तो वही वो कर रहे हैं कि विद ट्रांसफर कितना अमाउंट था और डेप्रिसिएशन था, और विदाउट ट्रांसफर कितना अमाउंट होता डेप्रिसिएशन होता, उन दोनों का डिफरेंस विल बी द एडजस्टमेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने भी वही किया। अगर हम ट्रांसफर नहीं करते, हमने उल्टा कर दिया, हमने 10,000 और 6,000 ले लिया बेसिकली। टेक्निकली ये 6,000 माइनस 10,000 होना चाहिए। तो गेटिंग क्या हो रहा है ये, पेरेंट के बुक्स में और सब्सिडियरी के बुक्स में क्या होना चाह रहा है। तो पेरेंट ने सेल किया हुआ है, तो पेरेंट अगर सेल नहीं करता तो डेप्रिसिएशन 6,000 का आता। करेक्ट। एनुअल एनुअल। और कैरिंग अमाउंट कितना था, हाँ। 4,000 बचा। बट जब ट्रांसफर कर दिया सब्सिडियरी को, तो क्या कॉस्ट आई, असेट की कॉस्ट 6,000, डेप्रिसिएशन है हम्म। 3,000, एडजस्टमेंट इज ऑफ एंड द कैरिंग अमाउंट इज 4,000। बट हम ये भी डायरेक्टली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 3,000 माइनस 4,000, आई मीन दोनों को, सिचुएशन वन विद ट्रांसफर, सिचुएशन टू विदाउट ट्रांसफर, दोनों में कैरिंग अमाउंट का क्या डिफरेंस है, 1,000। करेक्ट। हम्म। बट अगर इफ यू वांट ब्रेकअप ऑफ 1,000, 4,000 क्या है, ट्रांसफर इन कैरिंग अमाउंट, आई मीन ट्रांसफर अमाउंट। 3,000 का डिफरेंस इज कमिंग फ्रॉम डेप्रिसिएशन। तो टेक्निकली नेट नेट क्या हो रहा है डिफरेंस, 1,000 मैच। वही करना है कि ये सिचुएशन नहीं होती तो उसका एडजस्टमेंट क्या आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बस। क्योंकि पेरेंट की राइट। बुक में डेप्रिसिएशन इतना आ रहा होगा, सब्सिडियरी की बुक में इतना आ रहा होगा, वो कंसोलिडेशन में प्रॉफिट कंपोनेंट भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन में भी चेंज आ जाएगा। वो हमें क्यों करना है, हमें डेप्रिसिएशन का चेंज और कैरिंग अमाउंट का चेंज हटाना है, हमें सेम लाना है। ओके। तो हम ये एडजस्टमेंट पास करेंगे। ठीक है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, लेट्स अंडरस्टैंड। बिकॉज हमें प्रॉफिट एलिमिनेट करना है कंसोलिडेशन में, यू टेल मी व्हाट विल बी द एंट्री। अगर हमें प्रॉफिट कम करना है तो इन फाइनेंशियल, इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्रॉफिट कम करना है तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट कंपोनेंट कहाँ आता है बैलेंस शीट में, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट रिटेन अर्निंग। क्रेडिट कर देंगे ना। रिटेन अर्निंग ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है भाई। इनकम इज गेन ना, इनकम इज क्रेडिटेड। हाँ, तो डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स टू। डेबिट रिटेन अर्निंग, करेक्ट। देन प्रॉफिट कम कर रहे हैं तो कैश थोड़ी बाहर जा रहा है। ये रिटेन अर्निंग इज ऑफ सब्सिडियरी, राइट। आई मीन हाँ। नॉट सब्सिडियरी, जिसने भी सेल किया है, सेलर पार्टी, सेलर एंटिटी। ठीक है। देन ये जो कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस है 1,000, वो क्रेडिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देन क्रेडिट consolidated RE. Here our profit was how much, 2,000। PP का गया था, out of PP 1,000 and 1,000 was consolidated return earnings. Let's do one question for more better clarity. Come on to page number 460, illustration number 6. हम्म। P acquired 80% of S a number of years ago. ठीक है।
In current year, P has transferred an item of plant to as subsidiary for 6,000 on 1st of Jan 20x1. The plant originally cost for P 10,000. Useful life was 5,000 when purchased 3 years ago. इसका मतलब 3 साल उसने यूज किया पेरेंट ने, राइट? When purchased 3 years ago. हम्म। The useful life of asset has not changed as a result of transfer. यूजफुल लाइफ कोई चेंज नहीं है। 5 out of 5, 3 has been used by P, बाकी का 2 will be used by S। ठीक है, राइट। लेट्स गो विद प्रोफोर्मा। कॉस्ट क्या थी विदाउट ट्रांसफर? 10,000। डेप्रिसिएशन लग रहा था 3 साल का। 3 साल का, तो 6,000। कैरिंग अमाउंट कितना हुआ? 4,000। 4,000। इन करंट ईयर 2,000 का और लगेगा। 1 साल का। हम्म। 2 साल बचे, उसमें से 1 साल का लगेगा। करेक्ट। हाँ। विद ट्रांसफर हमने किस वैल्यू पे ट्रांसफर किया एस को? 6, 6,000। उस पे वो 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। 6 डिवाइड बाई 2, क्यों 3,000। 2 साल का? 3 साल तो उसने यूज किया ना सेट को। तो विदाउट में 1 साल का कर रहे हो, तो फिर विथ में दो क्या क्यों? What is question asking? What will be the unrealized profit will be treated in financial statement at 31st December 20x1? और हमने ट्रांसफर कब किया है? 20x1, तो तब why they have done 2000? Technically 3,000 is right, क्योंकि after 1st of Jan asset has been transferred। इसका मतलब the next 2 years of depreciation will be charged by S, और 6,000 का ऑलरेडी ले लिया हुआ है। तो 10,000 divided by 5 is 2,000, तो 6,000 तो वैसे भी हो गया। The overall adjustment will be 1,000 the reporting date, comprising 2,000 of the profit less of excess depreciation. अच्छा, okay, okay, okay. What they are trying to understood. Depreciation. What is the pro forma is saying? Carrying amount कितना है? हम क्या करना चाह रहे हैं? Carrying amount at the day of transfer कितना था? 4,000। 4,000 at the day of transfer, right? 4,000, क्योंकि हम्म। 6,000 already utilized। अब हम्म। डेप्रिसिएशन एट रिपोर्टिंग डेट, मतलब अगर हम ट्रांसफर नहीं करते तो 4,000 पे 2,000 डेप्रिसिएशन लगता। केस क्या है? विदाउट ट्रांसफर का ना। दो यू साल गेटिंग? का। नहीं, 2 साल का तो लगता, डेट इज फाइन, बट एनुअली तो 2,000 ही है ना। 2,000 2,000। सी क्या हो रहा है? वॉट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस, अगर सेल हम नहीं करते विदाउट ट्रांसफर में, क्या उसकी कैरिंग अमाउंट होती? डेप्रिसिएशन क्या होता उसी केस में? उसी केस में कैरिंग अमाउंट क्या होती? सेम वाइस वर्सा। विद ट्रांसफर में कैरिंग अमाउंट क्या है, डेप्रिसिएशन कितना है, और टोटल कैरिंग अमाउंट कितना है। ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट, दैट विल बी आवर एडजस्टमेंट फॉर द करंट ईयर। ठीक है, ट्रांसफर वैल्यू वाज 4,000, क्यों? क्योंकि 10,000 की कॉस्ट थी, 3 साल तो पेरेंट ने यूज किया, तो कैरिंग अमाउंट एट द डे ऑफ ट्रांसफर कितना था? 4,000। बट उसने क्या किया? 4,000 के चीज को 6,000 में बेचा। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट में ट्रांसफर मिला हमें 2,000 का, तो टेक्निकली दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 2,000। यू अग्री, राइट? या। अगर ट्रांसफर नहीं करते, डेप्रिसिएशन आता 2 साल एनुअली, सॉरी 2,000 एनुअली। हाँ, टू ट्रांसफर। थाउजेंड एनुअली। 1,000 एनुअली हुआ ना? इफ समबडी सेइंग यू माइट कि 10,000 का असेट है, उसकी 5 साल की यूजफुल लाइफ है, तो एनुअली कितना जा रहा है? अच्छा, ओके। के कंसेप्ट से फाइन हुआ। एनुअली 2,000 जा रहा है ना। अब हम्म। कैरिंग अमाउंट बचा है 2,000, नेक्स्ट ईयर वापस 2,000 जाएगा। हाँ।
करेक्ट। हम्म। विदाउट ट्रांसफर, अगर हम ट्रांसफर नहीं कर रहे तो 10,000 पे चलते हुए हैं तो नेक्स्ट ईयर हम्म। पूरा खत्म हो जाएगा असेट। बट ट्रांसफर हम्म। हमने 6,000 पे किया है तो वो 3,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 2 ईयर की यूजफुल लाइफ बची हुई है। तो हम्म। डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर इन इंटर कंपनी, इंटर ग्रुप, इंटर ग्रुप, वी आर गेटिंग difference of 2,000 in carrying amount, which is basically the profit element, and 1,000 in 1,000 difference in depreciation amount, and we don't want this. तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एलिमेंट 2,000 पूरा डेबिट कर देंगे फ्रॉम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, राइट। क्यों? क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडियरी को बेचा है, राइट। तो सारा का सारा प्रॉफिट पेरेंट के पास होगा, ग्रुप के पास होगा, इसलिए हम डेबिट कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग करेंगे। क्रेडिट हम हमारे असेट को करेंगे, क्योंकि हमें असेट की वैल्यू को एडजस्ट करना है, डेप्रिसिएशन। ठीक है। क्रेडिट सब्सिडियरी रिटेन अर्निंग, क्यों? क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन 100 से 1,000 से एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है और नहीं होना चाहिए था, हमें 2,000 के बेस लेके ही चलना है। तो उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उसका प्रॉफिट 1,000 से बढ़ाने के लिए वी क्रेडिटेड इट्स इट्स रिटेन अर्निंग। यू आर नॉट गेटिंग क्या? बहुत कंफ्यूजिंग है। अरे क्यों कंफ्यूजिंग है, हमें ये बेस लेके चलना है बेसिकली। हमें बेस लेके ये चलना है, जैसे हम इन्वेंट्री में बेस लेके चल रहे थे कि कॉस्ट हमारी 50 होनी चाहिए जिस जिस हाँ। टाइम पे बेची थी, ऑल्दो इन्वेंट्री इज हेल्ड बाई रिसीविंग एंटिटी, बट कंसोलिडेशन में तो प्लस हो जाएगी, तो कॉस्ट दोनों का सेम रहना चाहिए, ये हमारा लॉजिक था। हम्म। सेम लॉजिक इसमें, ऑल्दो असेट हैज बीन ट्रांसफर्ड, बट जो कॉस्ट होनी चाहिए, कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए, वही सेम होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर हमें कोई प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इसलिए हम इतना लफड़ा कर रहे हैं, वरना नहीं करते। राइट। करेक्ट। हमें हमारी असेट की कॉस्ट 2,000 ही रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, कुछ नहीं कर रहा, हम यही समझेंगे कि हमारा असेट कोई और यूज कर रहा है, कॉस्ट वो की वही है। यही लॉजिक है, इन्वेंट्री में भी ये लॉजिक है, ये भी, इसमें भी ये लॉजिक है असेट के टाइम। हम्म। तो हमारा टेक्निकली कैरिंग अमाउंट होना चाहिए था 2,000, बट अब आ रहा है 3,000। तो हमें हमारा बिकॉज कैरिंग ऑफ। अमाउंट 1,000 से कम करना है। हाँ। 1,000 से कम करना है कैरिंग अमाउंट, इसका मतलब हम असेट को क्रेडिट करेंगे। हाँ। ठीक है। हम उसके वजह से, ट्रांसफर के वजह से हमने हमने हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, किसका? पेरेंट का, क्योंकि पेरेंट ने ट्रांसफर किया। कैरिंग एट द डे ऑफ ट्रांसफर कैरिंग अमाउंट थी 4,000, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया 6,000 पे, तो 2,000 का प्रॉफिट है। हम्म। वो प्रॉफिट हमें एलिमिनेट करना है, तो डेबिट कर देंगे रिटेन अर्निंग क्रेडिट की जगह। हाँ। करेक्ट। अब सब्सिडियरी की रिटेन अर्निंग क्यों एडजस्ट करें 1,000 से? बिकॉज बिकॉज वो जो, हाँ, उसने क्या किया, 1,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज किया। टेक्निकली डेप्रिसिएशन चार्ज एनुअली 2,000 का होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ हायर परचेज प्राइस उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 3,000, तो हमें ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है? 1,000। तो सब्सिडियरी का प्रॉफिट 1,000 से कम हो गया होगा, यू अग्री? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,000 से बढ़ गया, प्रॉफिट 1,000 से कम हो गया होगा। करेक्ट ना? हाँ। हमने इसीलिए उसका रिटेन अर्निंग क्रेडिट किया हुआ है बाई 1,000। क्यों? ये लॉजिक है, क्योंकि हम हमें उसका प्रॉफिट बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि उसने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था, टेक्निकली 2,000 होना चाहिए, उसने चार्ज किया 3,000। तो जैसे ही हमने ये एंट्री पास की, टेक्निकली क्या हो गया सब चीज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो गया। प्रॉफिट एलिमिनेट हो गया, जो हमारा कंसर्न था। करेक्ट ना? हाँ। ये चीज सॉर्ट हो गई। हमने उसका रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर दिया, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन भी सॉर्ट हो गया। हम्म। हमें हमारा कैरिंग अमाउंट भी आई मीन कम करना था 1,000 से, वो भी हमने क्रेडिट कर दिया। तो तीनों चीज एडजस्ट हो गई, डिफरेंस सब कुछ हमने एडजस्ट कर दिया इन आर कंसोलिडेटेड फाइनेंसेस के। राइट। अब समझ आया? डन। या। ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेज,
वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट स्टिल उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो विल डू दिस केस एज वेल, कि अगर सेलर ने बेचा होता तो क्या सिनारियो रहता। ठीक है। तो अगर सेलर ने बेचा होता, डोंट यू थिंक सेलर के रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट कम होता, मतलब ज्यादा हुआ था, आई मीन उसने प्रॉफिट अर्न किया हुआ था। हम्म। तो हम सब्सिडियरी का रिटेन अर्निंग डेबिट कर देंगे, सेम लॉजिक जो हमने रिटेन पेरेंट का समझ के किया। करेक्ट। हमें हमारा एसेट की वैल्यू कम करनी है बाई 1000, वो हमने किया, ये रहा। हाँ। सेम। अब हम रिटेन अर्निंग किसकी एडजस्ट कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड, क्यों, क्योंकि उसने हायर प्राइस पे हमें बेचा होगा। हमारा प्रॉफिट, हमारा डेप्रिसिएशन 1000 से ज्यादा आया होगा। सेम लॉजिक, 1000 से ज्यादा आया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमने कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग को 1000 से प्लस कर दिया। अंडरस्टूड राइट। राइट। या। वाइस वर्सा सिचुएशन है। एंट्रीज चेंज सिर्फ सब्सिडियरी रिटेन अर्निंग और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में हो रहा है। वो भी अज्यूमिंग कि कौन सेलर है। सब्सिडियरी सेलर है, सब्सिडियरी का प्रॉफिट हटाओ, पेरेंट का प्रॉफिट बढ़ाओ, क्योंकि उसने हायर प्राइस पे बेचा होगा। सेलर का, आई मीन परचेसर का प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन ज्यादा आया होगा, उसका प्रॉफिट कम आया होगा, और टेक्निकली प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, हमने 1000 से बढ़ा दिया प्रॉफिट। पेरेंट इज द सेलर, सेलर सब्सिडियरी का प्रॉफिट हम बढ़ा देंगे। इस कंसोलिडेटेड सब्सिडियरी, आई मीन उसका एलिमिनेट करेंगे पहले तो पेरेंट का, क्योंकि उसने अर्न किया है, वो सेलर है। रिटेल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट माइनस करेंगे हम, फिर उसको क्रेडिट करेंगे हम। सब्सिडरी का प्रॉफिट बढ़ाएंगे क्योंकि उसका एक्सपेंस ज्यादा आया था, हायर प्राइस पे उसको सेल किया इसलिए। तो उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमने उसका प्रॉफिट, उसका रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर दिया, सेम। अंडरस्टूड द लॉजिक राइट, क्या हो रहा है, हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इट शुड नॉट थोड़ा बी बहुत। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच की ऐसा अच्छा प्लस माइनस करना है, नहीं लॉजिकली करना है कि हु इज द सेलर, हु इज द बायर। नाउ यू टेल मी वेयर यू आर कंफ्यूज। दोनों मिक्सअप हो गए हैं, मतलब। अरे सी, आई एम द पेरेंट, केस वन, आई एम द पेरेंट, यू आर द सब्सिडियरी। हम्म। आई सोल्ड द गुड वर्थ 10,000 टू यू, बट जब मैंने बेचा तब उसकी कैरिंग अमाउंट थी 4,000, क्योंकि 3 साल मैंने उसको यूज कर लिया। मैंने हम्म। मैंने सेल किया सब्सिडियरी को टू यू एट अ कॉस्ट ऑफ सिक्स 6,000, थाउजेंड इसका मतलब 2,000 हम्म। का प्रॉफिट मैंने अर्न किया। हाँ। बीइंग अ ग्रुप, मेरा प्रॉफिट तो ऐड होता ही है, सब्सिडियरी का प्रॉफिट भी प्रोपोर्शनल बेस पे ऐड होता है इन कंसोलिडेटेड। तो मेरा प्रॉफिट तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही है बाई 2,000। हाँ। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एलिमिनेट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने मेरे ही ग्रुप से, मेरे ही सब्सिडियरी से प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, विच इज रॉन्ग। हाँ। करेक्ट। तो मैंने मेरा प्रॉफिट कम करने के लिए मैंने मेरी रिटेन अर्निंग डेबिट की, दैट इज कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। ओके। यू क्लियर विद दिस एक्सपेक्ट। या। कैरिंग अमाउंट होना चाहिए था 2,000, आया 3,000, विदाउट ट्रांसफर विद ट्रांसफर, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें हमारा रिटेन अर्निंग, आई मीन होना चाहिए था 2,000, बट विदाउट विद ट्रांसफर कैरिंग अमाउंट आया थ्री प्रॉपर्टी प्लांट एंड थाउजेंड इक्विपमेंट का 3,000, बट होना हम्म। चाहिए कितना, 2,000। हम्म। क्योंकि अब हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि अगर ये ट्रांसफर नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रांसफर है ही नहीं, ये सब इंटर कंपनी प्लस माइनस है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं कि ये ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए। हाँ। इसलिए हम विदाउट ट्रांसफर का बेस लेके चल रहे हैं। ओके। बेस लेने का भी लॉजिक यू अंडरस्टूड राइट। हम्म। तो टेक्निकली 2,000 होना चाहिए था, इसलिए इसका मतलब हमारा इन्वेंट, आई मीन पीपी कॉस्ट भी ओवररेटेड है, ओवरस्टेटेड है, पीपी हाँ। कैरिंग अमाउंट। कैरिंग उसको अमाउंट, कम हाँ। करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया बाय 1,000। हम्म। अब सब्सिडरी के प्रॉफिट्स के बात आते हैं, प्रॉफिट पे आते हैं। 1,000 से उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्यों, क्योंकि उसका ट्रांसफर की वजह से उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा आ गया, तो उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा। हाँ। करेक्ट। हम्म। उसी का ही प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, सब्सिडियरी अर्निंग्स को प्लस कर दिया, क्रेडिट कर दिया बाई 1,000। ओके। वाइस वर्सा, यू आर द सेलर, नाउ आई एम द परचेजर। हम्म। ठीक है। अगर इफ यू आर द सेलर, प्रॉफिट विल बी अर्न बाई यू 2,000 का, और वो मुझे सब्सिडियरी एलिमिनेट में करना है होगा, हाँ। कंसोलिडेटेड, तो सब्सिडियरी रिटेन अर्निंग को मैं पहले डेबिट करूंगा।
हम्म। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो ओवर स्टेटेड ही है, तो मैं 1000 से उसको तो हटा ही दूंगा। हम्म। क्रेडिट अब मैं मेरी रिटेन अर्निंग करूंगा, क्योंकि यू सोल्ड मी एट अ कॉस्ट ऑफ 6000। अब आई एम द पेरेंट हु इज बेयरिंग द एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 एक्सपेंस। ठीक है। राइट। करेक्ट। तो मेरा प्रॉफिट 1000 से कम हो गया होगा, हाँ। बिकॉज ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, जो टेक्निकली नहीं होना चाहिए, हम्म। बिकॉज दिस इज द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। हम्म। So I increase my profit by crediting राइट। consolidated return earning. गॉट इट। Understood, right? या। With logic, कि बेस भी किस लॉजिक से लिया है, एंट्रीज जो पास हो रही है कौन से लॉजिक से हो रही है, हु इज अज्यूमिंग, हु इज द सेलर, हु इज द बायर। यस। ओके। नाउ मिड ईयर एक्विजिशन। अभी तो हम जो भी पढ़ रहे थे सब कुछ पढ़ रहे थे कि ओके दिसंबर इज द क्लोजिंग, जैन इज द ईयर एंड, तो जैन में हमने परचेस किया। बट व्हाट इफ somebody acquire someone in March, April, May, in between of the year basically. So, if a parent acquires a subsidiary mid-year, the net asset at the date of acquisition must be calculated based on net asset at the start of the date plus profit up to the date, up to the acquisition. To calculate this is normally assume that profit as profit, subsidiary profit after tax accrues evenly throughout the year. However, this is there may be exemption to this. The most common one of this is an intra-group loan from the parent to subsidiary at the date of acquisition. क्या करना है बेसिकली, व्हाट इट इज सेइंग, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जैन इज द ईयर एंड ईयर स्टार्ट, 31st December इज द 31st December इज रिपोर्टिंग डेट। ठीक है। somebody acquires on first, let's say 1st of March, तो हम क्या करते हैं, नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे और गुडविल। करेक्ट, राइट? हम्म। तो नेट एसेट में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये सब कब का होगा, up to the date of acquisition, you agree? या। तो इसका मतलब पोस्ट एक्विजिशन कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल somebody saying you कि मार्च तक रिटेन अर्निंग था 12, दिसंबर तक हो गया 18, तो 6 इज द रिटेन अर्निंग पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। हम्म। करेक्ट, बस उसी का ही प्रोपोर्शनेट करना है, कोई चेंज नहीं है, बट वही लॉजिक है कि मिड ईयर एक्विजिशन तो क्या करना है। ठीक राइट। है। एक और केस इसमें, एक और केस है कि अगर किसी ने लोन दिया हुआ है, सब्सिडियरी पेरेंट लोन ट्रांजैक्शन हुआ है, तो लोन भी अज्यूम करना है कि इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर हर महीने का लोन अमाउंट सेम है। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक लॉजिक इवनली अक्रू थ्रू आउट द ईयर का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि जो प्रॉफिट हुआ है ये 4.8 का, आई मीन 6 का पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मतलब 10 महीने का प्रॉफिट है ये। हम्म। तो ये भी हो सकता है ना कि पहले 9 महीने में एक भी प्रॉफिट ना हुआ हो, लास्ट के मंथ में आई गॉट 6 million ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट। बट फॉर एफ आर पर्पज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि अज्यूम कि ये जो हुआ है डिवाइड बाई 10, मतलब हर महीने 0.6 0.6 0.6 0.6 अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। हमारे राइट। कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है, बट अज्यूम अज्यूम कि ऐसा होता है, that the profit has been accrued evenly throughout the year. Although post acquisition profit है 6 million, I agree, तो कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मंथ 1 million का हुआ, कभी दूसरे महीने में 0 हुआ, नेक्स्ट मंथ 2 million का हो गया। अग्री, राइट? बट इसमें हम एफ आर में अज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट हैज बीन अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। और एक और चीज, अगर द मोस्ट कॉमन वन,
क्या कह रहा है, अगर इंट्रा ग्रुप लोन है तो क्या है, अगर इंट्रा ग्रुप लोन है तो, अगर इंट्रा ग्रुप लोन है तो हमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी माइनस करना होगा ना, वो भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करेंगे। कैसे करेंगे कि एक्विजिशन डेट तक, फॉर एग्जांपल सेम, इसमें इसमें लोन दिया हुआ ही था ऑलरेडी। फर्स्ट ऑफ, पहले जब लोन दिया था एंटिटी ने, बेसिकली ऑन 1 जन लोन दिया ऑफ था 100 रुपीज, तब दे वर नॉट इनटू पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप, करेक्ट। बट मार्च हम्म में दे वेंट कम इनटू पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप। तो इसका मतलब 2 महीने का जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी इनकम फॉर पेरेंट, that will be expense for subsidiary. But now for 10 months both are single entity. तो इसका मतलब जो 10 मंथ का इंटरेस्ट होगा वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। करेक्ट। तो एलिमिनेट भी कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 मंथ का है तो 10 मंथ का है ना, तो 10% पूरे साल का आ गया। व्हाट इज हैपनिंग मैम, ठीक है। तो 10 इज द इंटरेस्ट अमाउंट, दिस इंटू 10 डिवाइड बाई 12, करेक्ट। हम्म So 8.33333 will be eliminated from consolidated financial statement. Agree? या Perfect. वही कह रहा है, the most common one of this is the intra-group loan from parent to subsidiary at the day or at the date of acquisition। ऐसा इसमें कह रहा है एक्विजिशन के डेट के दिन ही लोन दिया, तो फिर तो पूरा का पूरा 10/12 ही होगा, द वे वी डिड। मतलब ये कह रहा है कि अगर मार्च को भी लोन दिया तो इंटरेस्ट जो पोस्ट एक्विजिशन होगा, जो एलिमिनेट करना है, वो प्रोपोरेटा बेसिस पे ही होगा। ऐसा नहीं कि फुल फुल ईयर हम करेंगे एलिमिनेट, ठीक है। मतलब एक्विजिशन के बेसिकली सेंस यही है, एक्विजिशन के बाद का इंटरेस्ट हमें एलिमिनेट करेंगे। क्यों? बिकॉज नाउ वी आर इनटू पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप, वी आर वन सिंगल ग्रुप, वी आर नॉट सेपरेट एंटिटीज। क्लियर? या If this is the case, the subsidiary would have, see, if this is the case, last line, the subsidiary will have incurred loan interest in the post acquisition period that would not have charged the pre-acquisition profit, pre-acquisition period, correct, right? हम्म वो इनकर हुआ होगा, बिकॉज ऑफ दैट उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा, वो हमें एलिमिनेट करना है। राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 461। या P acquired 80% of S on 1st of July। उस दिन एस की रिटेन अर्निंग क्या थी? नहीं, उसने ये नहीं दिया हुआ थे। व्हाट, नाउ नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एस रिटेन अर्निंग, बेसिकली सब्सिडियरीज रिटेन अर्निंग एट 31st December 20x1 was 15,000, और एस का प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ होगा 8,000 का, ठीक है, ठीक है। Immediately after acquisition, P made a loan to S of $40,000 which carried interest rate or at 10%, ठीक है। हमें इसको एलिमिनेट करना इंटरेस्ट कंपोनेंट का, तो हम क्या करेंगे? Read the solution. Normally, to find as return earning at acquisition, as profit could be time apportion। Basically, if somebody asks you कि post acquisition profit कितना हुआ, don't read the solution, just go with the question। With the question, what you are trying to understand कि at the day we acquire हमारा रिटेन अर्निंग कितना था, करेक्ट। और एट द रिपोर्टिंग डे रिटेन अर्निंग कितना है, तभी हम पोस्ट एक्विजिशन निकाल सकते हैं। बट इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हमने एक्वायर किया 1st of July को, और हमको रिटेन अर्निंग दिया 31st December, मतलब रिपोर्टिंग डेट थी। इसका मतलब हमारे वी डोंट हैव रिटेन अर्निंग ऑफ रिटेन अर्निंग एट द डे ऑफ एक्विजिशन, करेक्ट, राइट। करेक्ट। तो कैसे निकालेंगे? यू हैव बीन गिवन फुल ईयर प्रॉफिट ऑल्सो। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा बैलेंस शीट
का अगर अच्छा कमांड होगा तो यू बी एबल टू कैलकुलेट थोड़ा सा, dig down a bit, don't read the solution, just go with your knowledge, बैलेंस शीट नॉलेज कि कब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, क्रिएटिव अर्निंग में कौन से ईयर के प्रॉफिट होते हैं। I have to solve the whole question. नो यू डोंट हैव टू सॉल्व, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट अभी के लिए तो, कि रिटेन अर्निंग कितना होगा एट द डे ऑफ एक्विजिशन, सो दैट वी कैन कैलकुलेट पोस्ट एक्विजिशन कितना है। तो क्योंकि एट द डे ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितना था, पोस्ट एक्विज रिपोर्टिंग डेट का तो दिया हुआ ही है, हाँ, तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है पोस्ट एक्विजिशन कितना है, difference of both at the return earning at the day of acquisition, return earning at the day of reporting date, difference would be post acquisition reserve. then can you help? In question it is being given to you कि पूरे साल का एस का प्रॉफिट कितना था, 8,000 Hmm. एक्वायर किया 1 जुलाई को, तो इसका मतलब 1 जुलाई तक का प्रॉफिट सब कुछ प्री एक्विजिशन होगा, और हाँ, जुलाई के बाद का प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन। हाँ, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ, तो hmm, 8,000 इंटू 6/12 4, hmm. तो 4,000 इज पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, इसका मतलब रिटेन अर्निंग अगर मेरे को बैलेंस शीट में 15,000 दिख रहा है, इसका मतलब पूरे साल का प्रॉफिट भी उसके अंदर एडेड होगा रिटेन अर्निंग में, हाँ, करेक्ट। तो आउट ऑफ 15,000 4,000 माई पोस्ट एक्विजिशन, इसका मतलब एट द डे ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितना हो गया, 11,000, करेक्ट। right. ये तो क्वेश्चन था कि अगर लोन नहीं होता तो, अगर इसमें लोन भी आ गया होगा, लोन कंपोनेंट, तो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज एस सब्सिडियरी रिटेन अर्निंग एट द डे ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, सो क्वेश्चन इज सेइंग इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन P made a loan to S of 40,000 which carried interest at 10%। ठीक है, 40,000 का लोन दिया, तो डोंट यू थिंक कि 40,000 बेसिकली लोन अमाउंट कितना था, 40,000, रेट ऑफ ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10%, बट लोन कब दिया, एट 1 जुलाई। ठीक है, तो Hmm. 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12 ही करूंगा ना मैं इंटरेस्ट, Hmm. तो इसका मतलब 2,000 इज द इंटरेस्ट पोस्ट एक्विजिशन जो हमें एलिमिनेट करना है, करेक्ट राइट। Right. पूरे साल का कितना होगा, 4,000, तो 2,000 इज प्री एक्विजिशन, करेक्ट। Hmm. Other two is post. अदर टू इज पोस्ट एक्विजिशन, Hmm. टू बेसिकली 2,000 इज प्री, 2,000 इज पोस्ट एंड टोटल इंटरेस्ट इज 4,000। 4,000. सेकंड पैराग्राफ, हाउएवर from the solution, however the intra group loan skews the result of S, मतलब उसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्क्यू कर रही है, खराब कर रहा है। while S had made profit of the 8,000, पूरे साल का प्रॉफिट 8,000 था, there is a 2,000 interest cost in the post acquisition period which would not have existed in the first 6 months,
करेक्ट, हम्म क्योंकि तब लोन ही नहीं दिया था। हम्म करेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस, what question is saying, just read second paragraph one more time. इंट्रा ग्रुप लोन के वजह से results of S is Q, मतलब result of subsidiaries performance getting deteriorated by, why, because of the interest cost, क्योंकि वो हम्म इंटरेस्ट कॉस्ट भी पे कर रहा है। ठीक है, while S has made profit, 8,000 का प्रॉफिट उसने पे किया, देयर इज अ 2,000 इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका मतलब उसके अपने प्रॉफिट में से, स्टैंड अलोन, ठीक है, उसने अपने प्रॉफिट में से 2,000 का इंटरेस्ट कॉस्ट लेस किया होगा, जैसे हमने किया 4,000 टू 10% टू 6/12, जो मेरा इंटरेस्ट है पूरे साल का। हम्म तो डोंट यू थिंक कि वो डिडक्टेड होगा 8,000 में से, प्रॉफिट में से? हम्म बट जब जब हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है, तो वी हैव टू एलिमिनेट, राइट? या तो डोंट यू थिंक हम उसको ऐड बैक कर देंगे उसके प्रॉफिट में से? हाँ, क्योंकि पहले से डिडक्टेड था। तब जाके हम उसका प्रोपोर्शनेट करेंगे तो हमें प्री और पोस्ट पता लग जाएगा, हम्म प्री एक्विजिशन। यू गेटिंग राइट? देखो हमें क्या चाहिए, वी नीड प्रॉफिट फॉर द ईयर। या हम उसको प्रो रेटा कर देंगे छः छः महीने में, जैसे हमने पहले किया। 8,000 का 6/12 किया तो 4,000, तो हमने अज्यूम किया कि लोन वुड हैव नॉट इन द केस, तो 11,000 was the pre-acquisition. At the reporting date, 15,000 was the retained earning. So in between the year, the post-acquisition profit was 5,000. करेक्ट ना? या ओके, हमने जब एड बैक किया 8,000 को टू एडजस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आया 10,000। ठीक है, प्रॉफिट आया, व्हाट वी डिड, प्रॉफिट इनटू 6/12, 10,000 to 6/12, तो 5,000 इज द प्री एक्विजिशन। हम्म करेक्ट ना? 10,000 इज द फोल प्रॉफिट फॉर द एंटायर ईयर आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। यस हमने 1 जुलाई को एक्वायर किया, इसका मतलब 6/12, 5,000 इज पोस्ट एक्विजिशन और 5,000 इज प्री एक्विजिशन। छः छः महीने, हाँ इसलिए डिवाइड बाई 2, हाफ हाफ हो गया। हम्म ठीक है, तो करेक्ट प्रॉफिट स्प्लिट कितना होगा, व्हाट डू यू थिंक? 10,000 तो जो ऐड बैक करके मिला वो, हम्म, फिर पोस्ट को अपन निकालेंगे 2,000। हाउ तो 2,000? अच्छा, इंटरेस्ट कॉस्ट यू आर सेइंग। सो 8,000 विल बी। 8,000 इज द करेक्ट प्रॉफिट स्प्लिट। हम्म उसमें से 5,000 इज प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन इज 3। हम्म करेक्ट, क्योंकि 2,000 तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो है उसके प्रॉफिट का। हाँ, पोस्ट करेक्ट वाला, ना? हाँ हाँ, यस। तो अगर इफ समबडी सेइंग कि मेरा रिटेन अर्निंग 15,000 का है एट द रिपोर्टिंग डेट, बट जब मैंने एक्वायर किया था, वो मुझे कैलकुलेट करना है, बट मुझे ये पता है कि पोस्ट एक्विजिशन कितना है, 3,000 है, तो कैन कैन वी कैलकुलेट प्री एक्विजिशन? या एंड व्हाट विल द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट विदाउट सीइंग द आंसर? जस्ट डू दिस वे, प्री पोस्ट ईयर एंड प्रॉफिट। ठीक है, ईयर एंड प्रॉफिट दिया हुआ 15,000, वी हैव गिवन पोस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया 3,000 है, तो ये कितना होगा प्री? 12,000। कितना? 12,000। ओके, अंडरस्टूड क्या हुआ? डन। सो या वी आर डन विद चैप्टर 18 as well. It's 1:40 right now. Let's take a break till 2:10, 14:10,
and we'll continue with our chapter 19 then. Consolidated statement of financial profit and loss now. Okay. And assume that we have completed 80% of the consolidation, not 80%, 70% of consolidation. 30% is left. Okay. Okay. So we have completed major chunk. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Bye. Bye.
या Let's start with chapter 19, consolidated P&L. In this chapter, everything is same, just कहाँ कहाँ कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट होगा वही देखना है, क्योंकि जितनी टेक्निकलिटीज थी, कितने टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते थे, कंसेप्चुअल रिगार्डिंग, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अब इसमें यही चीज पढ़नी है कि जैसे इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग था, तो जैसे हम इन इन बैलेंस शीट, इसके पहले बैलेंस शीट का चैप्टर था ना, तो वी वर एडजस्टिंग इट विद रिटेन अर्निंग, बट रिटेन अर्निंग इज व्हाट, एडजस्टिंग विद पीएनएल। तो पीएनएल में कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, दैट्स व्हाट वी आर गोना लर्न। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। The consolidated P&L shows profit generated by all resources disclosed in related consolidated statement of financial position is that net asset of any subsidiaries. This note will assume a single subsidiary, although FR may have two subsidiaries. In FR exam, you might be getting question of two subsidiaries, one subsidiary, one associate, or two associate, one sub, or both the subsidiaries. कुछ भी आ सकता है consolidation में, ठीक है। Consolidated P&L as below are the principal. From revenue down to profit include all parents' income and expenses plus all subsidiaries' income and expenses reflecting in fees control. ठीक है। After profit of the year show split between amounts attributable to parent and amount attributable to NCI. Basically सब कुछ कर लिया। जैसे revenue P plus S, COS, GP, OP costs, finance cost, any investment income, PBT, tax, PAT. ठीक है, this is the profit balance finance, sorry, this is P&L statement, parent plus subsidiary all. लास्ट में एक लाइन छोड़ने के बाद you have to show profits attributable to group, basically parent, net profit attributable to NCI. ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या शो करना है, जो जो प्रॉफिट यहाँ पे आया है उसमें से कितना पोर्शन इज ऑफ पेरेंट और एनसीए का कितना पोर्शन, ये बाइफोगेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स लेस एनसीआई, ये इसका फॉर्मूला है फॉर पेरेंट। मतलब प्रॉफिट में से एनसीआई का पोर्शन चला गया तो सब कुछ पेरेंट का बचा है, यही मतलब होता है ना। तो हम एक एनसीआई कैलकुलेट करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट फॉर द ईयर में से एनसीआई का पोर्शन माइनस कर देंगे तो विल गेट द पेरेंट पोर्शन। ठीक है। अगर इन एग्जाम यू जस्ट कैलकुलेटेड टिल हियर और सब कुछ एडजस्टमेंट सही था, वर्किंग भी सही थी, बट स्टिल यू विल लूज 2 मार्क्स ऑफ दिस एडजस्टमेंट। ये भी एक पीएनएल का ही पार्ट है ऑफ कंसोलिडेटेड पीएनएल, कि यू हैव टू शो प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये शो करना है। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। व्हाट इज इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग? Trading between subsidiary and parent. परफेक्ट। सेम तो हम वहां पे रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर रहे थे, हम्म। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि रिटेन अर्निंग क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम बढ़ा दे रहे हैं, प्रॉफिट कम हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग में आ जा रहा है, बट वो वहां पे बैलेंस शीट ही पढ़ रहे थे, इसलिए सब कुछ रिटेन अर्निंग जा रहा था। ठीक है। कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू में क्या है, पीस रेवेन्यू प्लस एस रेवेन्यू, वो तो करेंगे लेस इंट्रा ग्रुप सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में
पीस कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस इंट्रा ग्रुप सेल, क्योंकि उसके लिए तो परचेज है ना सब्सिडियरी के लिए, हम्म। और वाइस वर्सा है तो पेरेंट के लिए परचेज है, तो बेसिकली सेल्स परचेज हटाना है। ठीक है। जस्ट सेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बुक उसके एक्सपेंस में आएगा, लिस्ट होगा। बेसिकली इंटरेस्ट पेएबल टू सब पेरेंट, अगर पेरेंट ने लोन दिया है तो वो भी हम एलिमिनेट कर देंगे इन कंसोलिडेटेड पीएनएल। सेम एज कैसे होगा, फॉर एग्जांपल पेरेंट और सब्सिडियरी का फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स है, उसके फाइनेंस कॉस्ट में लिखा होगा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और अगर आई एम अज्यूमिंग पेरेंट इज गिविंग लोन टू सब्सिडियरी, इन हम्म। सब्सिडियरीज बुक इंटरेस्ट पेबल। एक्सपेंस टू पी। ठीक है, तो ये दोनों रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्या? एलिमिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है तो लेस 100, सेम एज यहाँ पे, बेसिकली इन कंसोलिडेटेड में कहते हैं। ठीक है। या। टेक्निकलिटीज हमने चैप्टर 18 में पढ़ लिया, अभी सिर्फ यहाँ पे कहाँ पीएनएल में इम्पैक्ट आएगा वही देखना है, कौन से हम्म। अकाउंट में। Now dividend, I just told you what will be the treatment for dividend. सेम एलिमिनेट, हाँ। उसमें आएगा डिविडेंड, यहाँ पे आएगा डिविडेंड इनकम, तो वो डिविडेंड पेबल। या। डिविडेंड कभी पीएनएल में नहीं आता। if 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 in question it's question is saying that subsidiary has proposed dividend of 100,000 to its shareholder, तो 100,000 हमारे बुक्स में दिखेगा डिविडेंड इनकम फ्रॉम सब्सिडियरी इन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, बट इन कंसोलिडेशन वो डिविडेंड इनकम एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, या। ऑब्वियसली राइट। हम्म। लेट्स डू दिस इलस्ट्रेशन, illustration number 1, पेज नंबर 491। Profit and loss is being given of 31st August 20x4 are shown. Paddle acquired 75% of ordinary share capital of several years ago. तो इसमें तो सब कुछ ऑलरेडी एक्वायर्ड 75%, और कोई मीड ईयर एक्विजिशन भी नहीं है। तो 2400 प्लस 800, रेवेन्यू रेवेन्यू, हम्म। कॉस्ट ऑफ सेल प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम, जीरो जीरो है, खत्म। नीचे क्या लिखा हुआ है, सी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्किप, so that will be eliminated. If you see consolidated P&L, that part has been removed, dividend part has been eliminated basically. ठीक है, हम्म। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इनकम के बाद पीवीटी आ रहा है। देन इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नील है, तो जीरो जीरो।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस प्लस इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्ट सॉरी इनकम टैक्सेस प्लस प्लस and profit attributable to this plus plus. Now profit for the year is 165. We have to make total. Now, we have to show profit attributable to owners and profit attributable to NCI. So what will the share of owner? Total group profit is 165, but out of 165 there is a part of NCI as well. So NCI का कितना शेयर है? 25% of 40. Why 25%? Because if you see skip का total profit for the year is 40. उसका सिर्फ 75% अपना है, 25 ऑफ एनसीआई, हाँ। तो 40 into 25, तो 10 would हम्म। be of NCI portion. तो out of 165, 10 is of NCI portion, तो 155 of owner capital, owner profit सर. ठीक है. हम्म। Now provision for unrealized profit. If any goods sold in intra-group are included in the closing inventory, there must be adjusted to cost of sales. I just told you cost of sales में adjust करेंगे हम, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा. और वो हमारा मोटो था. और बैलेंस शीट में कहाँ इंपैक्ट जाएगा? यू टेल मी नाउ, यू टेल मी वेयर विल द इम्पैक्ट इन बैलेंस शीट टू एलिमिनेट प्रॉफिट. डेबिट वुड बी कॉस्ट ऑफ सेल्स. व्हाट वुड द क्रेडिट? हमें क्या कम करना है, कहाँ से क्या कम करना है? प्रॉफिट कम करना है। हाँ, प्रॉफिट हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ा के कम कर दिया. इन्वेंट्री भी तो 120 पे शो कर रही थी, तो हम 120 20 से इन्वेंट्री को भी तो कम करेंगे ताकि 100 मैच हो जाए. हाँ। राइट। ठीक है. देन ट्रांसफर्स ऑफ नॉन करंट असेट्स. सेम. एनी प्रॉफिट अराइजिंग ऑन ट्रांसफर मस्ट बी रिमूव्ड. हम पहले इन इन आर एग्जांपल हम रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर रहे थे. इफ यू रिमेंबर, जो सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल कर रहा है, पेरेंट के रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर रहे थे. बट अगर उसके प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा हुआ है कि इन गेन ऑन असेट सोल्ड टू सब्सिडियरी, तो वही एलिमिनेट कर देंगे, तो रिटेन अर्निंग में करने की जरूरत ही नहीं है. यू गेटिंग हम्म। माई पॉइंट? हम्म। ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक, तीन एंट्री हो रही है क्या? मतलब रिटेन अर्निंग में भी एंट्री हो रही है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी एंट्री हो रही है. दैट्स व्हाट यू आर फीलिंग. इफ हाँ। इफ दिस इज द केस, यू आर रॉन्ग. एंट्री हमेशा, अरे रिटेन अर्निंग इज व्हाट प्रॉफिट. हमें हम उस चैप्टर का नाम था बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, इसलिए उसमें पीएनएल की बात ही नहीं करी थी, इसलिए उसको रिटेन अर्निंग से सब कुछ एडजस्ट कर रहे थे. बट ये तो हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो इसमें हम्म। एक्चुअल इंपैक्ट शो होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा. इफ इफ इन केस अगर आपको इन एग्जाम दोनों चीज प्रिपेयर करने को बोला, दिस इज वेरी रेयर एंड नॉट गोना कम, बट स्टिल, कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करने हैं. बट बिकॉज ऑफ, ऑल्दो इट कैन कम, बट 20 मार्क्स में दोनों पूछना इज वेरी रेयर. एक ही चीज पूछेंगे कोई भी वो लोग. बट अगर दोनों पूछा है तो इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. अरे प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर दिया, माइनस कर दिया, एलिमिनेट, तो जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो रिटेन अर्निंग में चला गया, तो वो ऑलरेडी माइनस को हमने माइनस कर दिया हुआ है. तो रिटेन अर्निंग में नेगेटिव माइनस ऑलरेडी डिडक्टेड अमाउंट ही गया हुआ है ना. तो ओके। सो हाँ। काइंड ऑफ रिटेन अर्निंग भी एडजस्टेड ही है. करेक्ट. हाँ। बट हाँ। अगर इन क्वेश्चन यू जस्ट बीन टोल्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो फिर यू विल पास एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग. करेक्ट. क्योंकि उसमें उसमें इम्पैक्ट आएगा ना आपका. हम्म। करेक्ट. तो देर इज नो डबल एंट्री की रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया तो देर इज नो एंट्री इन रिटेन अर्निंग, क्योंकि ऑलरेडी डिडक्टेड अमाउंट ही गया रिटेन अर्निंग में, तो डबल डबल डिडक्शन क्यों करेंगे? राइट। ठीक है. रिटेन अर्निंग क्या है? प्रॉफिट ही तो है, तो प्रॉफिट में से ऑलरेडी कम करे, रिटेन अर्निंग में वापस क्यों जाएंगे? करेक्ट. हम्म। वही चीज है. द डेप्रिसिएशन चार्ज अगेन, दो चीज हम एडजस्ट कर रहे थे. एक तो जिसने प्रॉफिट कमाया उसका रिटेन अर्निंग डेबिट कर रहे थे, और जिसका डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा था उसका प्रॉफिट बढ़ा रहे थे. बिकॉज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा आ रहा था 1000 से इन आर एग्जाम्पल, रिमेंबर. या। तो हम उसका प्रॉफिट बढ़ा देंगे. So same, the depreciation charge for the buyer must be adjusted so that it is based on the cost of asset to the group. तो depreciation charge जो एडजस्ट करेंगे वो बेसिकली प्रॉफिट बढ़ा देंगे. ठीक है. तो पीएनएल में ये इंपैक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज रिवर्स कर देंगे. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है 10,000 का, और हमारा ऑलरेडी ज्यादा ही था, तो हम 1000 से माइनस कर देंगे हमारे, तो पीएनएल में 9,000 ही है. तो
इसका मतलब 10,000 का डेप्रिसिएशन 9,000 हो गया, प्रॉफिट ऑलरेडी 1,000 से बढ़ गया, तो रिटेन अर्निंग में क्यों जाएंगे वापस? बट अगर राइट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो फिर विल माइनस इन बैलेंस शीट रिटेन अर्निंग, क्योंकि अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है तो देर आर चांसेस कि जो एडजस्टमेंट हमें दिए हुए हैं इन एग्जाम टू टू सॉल्व द एडजस्टमेंट, वो अकाउंट में लिए हुए नहीं है, तो हमें उसको अकाउंट में लेने के लिए हमें रिटेन अर्निंग से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। जो राइट। गेटिंग क्या हो रहा है फाइनेंशियल पोजीशन में, सब कुछ क्या हो रहा है स्टेटमेंट। यस। ठीक है, तो वही चीज है। एंड वन मोर थिंग, ऑल दिस एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, करेक्ट, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल था, वो भी हम एडजस्ट करेंगे पीएनएल में। इम्पेयरमेंट फॉर गुडविल लाइन आइटम बनाएंगे, इम्पेयरमेंट गुडविल, वो इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे। फिर फेयर वैल्यू चेंजेस, अगर फेयर वैल्यू में कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट, करेक्ट। या। प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस कब, जब एक्विजिशन कर रहे थे उसके, वो एक्विजिशन करने के लिए वी वर पेइंग प्रोफेशनल फीस, तो वो हमको बोला था कि दैट विल बी डायरेक्टली गो टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट अवे, तो ये हम्म। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डेफर्ड कंसिडरेशन इज व्हाट, अमाउंट पेएबल इन फ्यूचर विद फ्यू कंडीशंस, करेक्ट। तो उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट, डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट डेफर्ड लायबिलिटी, करेक्ट, वो हम कर रहे थे, तो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन, इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन लायबिलिटी, ये करके हम दिखाएंगे पीएनएल में, राइट। करेक्ट। और ये नीचे एंट्री भी दी हुआ है कंटीजेंट कंसिडरेशन की, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कंसिडरेशन लायबिलिटी इन एसएफपी फाइनेंशियल पोजीशन, so expense is debited in P&L। ठीक है, one more thing, if you were being told that this is a mid-year acquisition, तो हम बैलेंस शीट में तो क्या कर रहे थे, मीडिया एक्विजिशन का कुछ नहीं, इवन इफ ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है और हम 30 दिसंबर को हम परचेज कर रहे हैं कोई एंटिटी को, फिर भी हम बैलेंस शीट में सब कुछ प्लस प्लस करके दिखाएंगे, करेक्ट। बट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, हम सिर्फ उतना ही पीरियड का दिखाएंगे जितनी हमारी पोस्ट एक्विजिशन हमारा कंट्रोल आ गया उस चीज पे, उतनी चीज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 501। ठीक है, इथॉस एंड पैथॉस दोनों के एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, ईयर एंड इज 31 मार्च 20x9। क्वेश्चन में दिया हुआ ऑन 30th November 2008 Ethos acquired 75% of ordinary share capital, no dividend has been paid, investment income is quoted, investment has been corrected for, the profit has been deemed to be accrued evenly throughout the year। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट of both entities are deemed to accrue evenly throughout the year, मतलब I made you understood this one। अज्यूमिंग कि सेम प्रॉफिट हर मंथली आया होगा, ऐसा नहीं कि ऑल्दो पोस्ट एक्विजिशन इज, जो पोस्ट एक्विजिशन हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा दैट इज सेम, बट हम अज्यूम करेंगे फॉर एग्जांपल 100 पोस्ट एक्विजिशन आया है तो 10 10 10 हर महीने का आया है, अगर 10 महीने का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड था तो। ऐसा नहीं कि कोई हम्म। मंथ में जीरो आया है, कोई लास्ट सब मंथ में जीरो रिजर्व था, लास्ट मंथ में 10 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर ऐसा भी कैसे फिर भी हमारा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व तो 10 ही रहेगा, बट इन दिस, इन फॉर एफआर, प्रॉफिट फॉर बोथ एंटिटीज आर डीम टू अक्रू इवनली थ्रू ऑफ द ईयर, मतलब सेम सेम ही प्रॉफिट है हर मंथ का। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व रेवेन्यू प्लस प्लस, बट हाउ मच, ओनली दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, 4 महीने का हम करेंगे प्रोरेटा बेसिस, क्योंकि हमने नवंबर को परचेस किया है, हमारा राइट सिर्फ 4 महीने का है टिल टिल मार्च। पर हम्म। बैलेंस शीट में उल्टा है, बैलेंस शीट में सब कुछ प्लस होगा, देयर इज नो प्रोरेटा फॉर बैलेंस शीट। ठीक है, revenue plus plus cost of sale plus plus, पर only 4/12 4/12, make sure you do that। ऑपरेटिंग कॉस्ट 4/12 4/12 4/12 4/12, बट लास्ट में हम जब प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लिया, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल में और एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स और एनसीआई, एनसीआई में क्या करेंगे, 32,000 इज द टोटल प्रॉफिट, बट इसमें से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 32, 32,800 है, 32,800 इंटू 4/12, दिस इज द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसका 25%, इसका 25% है, यस इसका 25% is of NCI, तो 2733 is of NCI, तो आउट ऑफ 56 का ग्रुप प्रॉफिट, 2733 ऑफ NCI, तो 53,400 इज ऑफ ओनर्स प्रॉफिट। राइट। ठीक है, लेट्स रीड अ बिट ऑफ थियरी इन बिलो दैट।
Ethos acquired 75% of ordinary share capital on this date. This is the date on which control passed, and hence the date from which results of Pathos has been reflected in the consolidated financial consolidated P&L. All profit earned by Pathos in 4 months since that date are post-acquisition profits. ठीक है? From that month, from November. The previous 8 month profit from April to November are pre-acquisition and would be included within the reserve at acquisition for the calculation goodwill. You agree? Yeah. Perfect. Perfect. ठीक है. That's it for this chapter. There is nothing much. Let's come to chapter 20, associates. Till now we were considering parent subsidiary relationship. Now we will be into associate relationship. There is no control. ठीक है? Basically investment percentage between 20% to 50%. ठीक है? क्योंकि above 50% कंट्रोल आ जाएगा. Correct? Hmm. This will be associates. Associates, if we have anything investment between 20 to 50%, that entity will be associate for us. ठीक है? And have participative rights and have participative rights in taking in entity policies. ठीक है? Investment percentage between 20 to 50% and have participative rights in entity policy and business decisions. Matlab, although we do not have control for the entity, but still we do have enough share, enough holding, so we can participate in the policy. Although, for example, we have 30% holding, but still हम participate कर सकते हैं. अच्छा ये business decision मत लो, ये policy apply करो, that will be better. We can put our opinion, but there is a chance कि 75 70 rest 70% कोई और own कर रहा है, तो वो फिर कंट्रोल में आ गया तो basically he will have the majority votes and decision will be performed by his consideration. Correct? But we must have participative rights. But if we do not have participative rights, there is no associate relation. ठीक है? Understood? Definition: an entity over which investor has significant influence. Investor means I am investing in your company. I am investing somewhere around 30 to 35%. I'm purchasing your company 30 to 35% company. So this means that I do have significant influence in your company. In what? Significant influence in what? In power to participate in financial and operating policies decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies. Participative rights hai, but there is no control. Correct? I can Yeah. put on my opinion in your company ki you should do this, you should do that, but ultimately it depends upon the rest 70% entity what he wants your company to be performed. ठीक है? Hmm. So significant influence is assumed with a shareholding of 20 to 50%. ठीक है? And for accounting of associates, accounting of associates, we do not account of standard has given method called
इक्विटी अकाउंटिंग. What was the accounting method for control for subsidiaries? आई डोंट नो. Consolidation. अच्छा. और Consolidation कुछ? is a method. Okay. Once we got the control, हम consolidate करेंगे. But इसमें we will use equity method. What we'll do, for example, पीएनएल में क्या, पीएनएल में कैसे शो करेंगे इसको, एंड बैलेंस शीट में कैसे. बैलेंस शीट में विल शो शेयर ऑफ associates profits for the period. ठीक है. इन बैलेंस शीट हम क्या शो करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन नॉन करंट असेट्स. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कितना अमाउंट हमने पे किया, प्लस पोस्ट एड पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ आर शेयर, करेक्ट, less any dividend which we have pay, which being paid by the associate company to us. Why are we reducing the dividend? Because हम उसका पूरा प्रॉफिट का पोर्शन ही हम हमारे इसमें ले रहे हैं, तो इस और डिविडेंड प्रॉफिट से ही पे होता है. हम प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड करते तो डिविडेंड वापस क्यों ऐड करेंगे. इसका मतलब प्रॉफिट पूरा ऐड किया, इसका मतलब डिविडेंड भी कहीं ना कहीं ऐड हो गया ना. यू गॉट द पॉइंट. या या. इसलिए डिविडेंड होगा, इसको हम रिड्यूस कर देंगे, लेस इम्पेयरमेंट, डू नॉट टेक इन अकाउंट लेस इम्पेयरमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली फेयर वैल्यू चेंजेस ऊपर नीचे होंगे, अगर कुछ इम्पेयरमेंट हुआ तो हम अकाउंट में लेंगे, बट इम्पेयरमेंट भी कितना, ऑफ आर शेयर. मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ले लेंगे. अगर 25% एक्वायर किया, 25% ही करेंगे. ये भी कितना होगा, 25%. ये भी 25%. ठीक है. ये बैलेंस शीट में शो होगा. और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो होगा, ये वाला पार्ट, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, करेक्ट. हम्म. तो ये पार्ट यहाँ पे शो होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट फॉर द पीरियड. और इम्पेयरमेंट भी है तो वो भी पीएनएल आइटम है, तो वो भी पीएनएल आइटम यहाँ पे शो होगा, काइंड ऑफ इम्पेयर. ठीक है. अंडरस्टूड. क्या होगा, या. एक एक लाइन आइटम में प्रॉफिट कितना है पीएनएल में दिखाना है, इम्पेयरमेंट कितना है पीएनएल में दिखाना है, बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस पोस्ट एक्विजिशन, अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो लेस क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है. सेम इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट. अगर एसोसिएट्स और एसोसिएट कंपनी के साथ कोई ट्रेड हो रहा है हमारा, तो वो भी हम एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है. जनरली एसोसिएट इज कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड द ग्रुप, देयरफॉर एनी परचेज is considered to be outside the group. Therefore, any purchase between the group companies and the associate are not normally eliminated and will remain part. अच्छा, basically क्या हो रहा है, एसोसिएट कंपनी है ना, वो हम ग्रुप से आउटसाइड मांगते हैं, क्योंकि वी डू नॉट हैव कंट्रोल, तो वी जस्ट हैव इन्वेस्टमेंट, तो हम इन्वेस्टमेंट की तरह ही दिखाएंगे. ऐसा नहीं कि कंट्रोल हम हमारी एज ए सिंगल ग्रुप मानेंगे उसको, नो. तो जो भी परचेज सेल होगा बिटवीन एसोसिएट्स, सॉरी एसोसिएट्स एंड पेरेंट, दैट टू एसोसिएट इन ग्रुप कंपनी दैट इज कंसिडर आउटसाइड द ग्रुप, इसका मतलब हम उसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट. बट अगर पेरेंट ने कुछ बेचा हुआ है सबसे एसोसिएट को,
तो इसका मतलब डोंट यू थिंक कि वो जो प्रॉफिट होगा अनरियलाइज प्रॉफिट वो हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे और इन्वेंट्री इन्वेंट्री को बढ़ा देंगे। बेसिकली ये हो रहा है, नॉट बढ़ा देंगे, कम कर देंगे। इन नॉर्मल प्रैक्टिस, to adjust the unrealized profits of inventory, only P's share of unrealized profit must be adjusted. P's share मतलब parent का कितना share है, where parent sell to associate, pro, provision for unrealized profit is added to the cost of sales. ठीक है, where associate sells to parent, PUP is deducted from the share of associate profit. क्यों? You tell me. पेरेंट अगर एसोसिएट कुछ सेल कर रहा है, उसका अनरियलाइज प्रॉफिट हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देंगे, सेम एज व्हाट वी वर डूइंग इन इन्वेंट्री सब्सिडियरी रिलेशनशिप। हम्म। सेम एज अगर एसोसिएट पेरेंट को बेच रहा है, वाइस वर्सा, सब एसोसिएट इज सेलिंग टू पेरेंट्स का मतलब प्रॉफिट इज अर्न बाय एसोसिएट। तो उसका जो पोर्शन हम लेंगे, पोर्शन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट, उसमें ऑलरेडी अर्न किया होगा उसने वो प्रॉफिट जो हमको उसने बेचा। करेक्ट, राइट? सेम लॉजिक है। व्हाई आर यू साउंडिंग लाइक यू आर कंफ्यूज? नो नो, आई एम नॉट। तो प्रॉफिट विल बी अर्न बाय एसोसिएट। तो इस डोंट यू थिंक ये पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट होगा उसमें वो ऑलरेडी कंपोनेंट होगा, इसलिए हम नीचे लेस करेंगे PURP, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, लेस कितना पोर्शन, सिर्फ पेरेंट के शेयर जितना पोर्शन, मतलब 25% ये भी। करेक्ट। हम्म। बस ये तीनों एडजस्टमेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में तो यहाँ और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ये यहाँ पे जो अमाउंट आएगा दैट विल बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। सिर्फ ये कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वोट गोइंग PNL। ठीक है, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट है तो वो असेट साइड से होगा, बाकी सब ऊपर प्लस माइनस जो भी मूवमेंट होगा करंट ईयर में दैट विल बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट। या सो वी आर डन विद एसोसिएट अकाउंटिंग एज वेल। एसोसिएट में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पोस्ट एक्विजिशन, इम्पेयरमेंट, PURP, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हम्म। क्लोजिंग बैलेंस विल गो इन बैलेंस शीट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इम्पेयरमेंट, PURP विल गो इन PNL। PURP कहाँ जाएगा? PNL। PNL, बस कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगा। हम्म। इम्पेयरमेंट PNL, पोस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड, शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। करेक्ट। Fun. ठीक है। लास्ट चैप्टर ऑफ कंसोलिडेशन, डिस्पोजल। व्हाट इफ वी आर सेलिंग द एंटिटी? इसमें तो बहुत सिंपल है डिस्पोजल इन SBI। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ चीज कि क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस डिस्पोजल, देन आई विल गिव यू gist of SBR, what complication it will add you in that subject। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड डिस्पोजल फ्रॉम योर लेमन लैंग्वेज। व्हाट इज डिस्पोजल? डिस्पोजल इज व्हाट, कैरिंग अमाउंट जो भी होगा, बेसिकली प्रोसीड्स 100, कैरिंग अमाउंट वाज 80, प्रॉफिट इज ऑफ 20। करेक्ट। ठीक है, दिस इज द लेमन लैंग्वेज हाउ डिस्पोजल इज अकाउंटेड ऑफ एनी असेट। Yeah. सो फॉर डिस्पोजल there are two ways profit is calculated. First, profit in consolidated FS and profits in individual, basically standalone फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो आएगा प्रॉफिट। करेक्ट। हम्म। तो कैलकुलेशन ऑफ बोथ इज डिफरेंट कि कंसोलिडेशन में कितना आएगा और इंडिविजुअल
एंटी स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में कितना आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आई एम कंपनी, आई परचेज यू एंड आई सोल्ड योर कंपनी एट सो एंड सो डेट एंड सो एंड सो रेट एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो एक तो होता है कि मैं इंडिविजुअल में मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा, एंड एक होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट क्या होगा। लेट्स अंडरस्टैंड. फॉर मी, बीइंग एन फ्रॉम assuming from a basically from standalone financial statement point of view, we both are different entities. Mm. As I sold you, I'll be incurring a profit, gain on disposal. Yeah. So for profits in standalone, it is this simplistic. प्रोसीड्स मतलब मैंने, सॉरी, मैंने परचेज करने के टाइम पे कितना पे किया था, और जब सेल किया तब उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, ठीक है? प्रॉफिट इज ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ. बट बट जब मैं इसकी बात करता हूँ, प्रॉफिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है? इसमें एनसीआई है, नेट असेट्स है, पूरे सबको अकाउंट में लेके वी हैव टू कैलकुलेट आवर प्रॉफिट. बट हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? लेट्स अंडरस्टैंड. Before understanding disposal, let's understand the theory, a bit of theory. जैसे परचेज, व्हेन वी वर परचेजिंग एन एंटिटी, हम उतने जब से कंट्रोल आया तब का पोर्शन ही ऐड करते थे. फॉर एग्जांपल, पोस्ट एक्विजिशन 4 मंथ का था. इन एग्जांपल, ईयर एंड वाज मार्च, एक्वायर्ड ऑन नवंबर, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 4 महीने का ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड कर रहे थे. करेक्ट? तो बैलेंस शीट में हम पूरे साल, इवन इफ वी आर परचेजिंग डे बिफोर ईयर एंड, स्टिल बैलेंस शीट में सब कुछ टोटल होगा. करेक्ट? बट प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का ही दिखाते हैं. सेम एज डिस्पोजल. फॉर एग्जाम्पल, ईयर एंड इज मार्च एंड वी आर डिस्पोजिंग ऑन नवंबर, तो हम सिर्फ 8 मंथ का ही प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, 4 महीने का नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने नवंबर के बाद डिस्पोज कर दिया एंटिटी को. करेक्ट? बट बैलेंस शीट में, बिकॉज वी आर एंडिंग इन पुटिंग इन करंट पीरियड, मतलब सेलिंग इन करंट पीरियड, we will put all the balances in our financial position. Right. So 100% of the subsidiary consolidated up to date of disposal, up to the date of disposal, गेन और लॉस रिकॉर्ड होगा. गेन और लॉस कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शो होगा. ठीक है? अनलेस सब्सिडियरी के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करके एक हेड है, उसके अंदर दिखा देंगे कि इन्वेस्टमेंट में कितना है, इन्वेस्टमेंट इनकम में कितना है. अगर हेड नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखा देंगे. फाइनेंशियल पोजीशन, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल टू बी इंक्लूडेड विद इन रिटेन अर्निंग. करेक्ट? ये जो गेन रिकॉर्ड किया आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करते हो, अल्टीमेटली गया रिटेन अर्निंग में. ठीक है ना? करेक्ट? Yes. एट द ईयर एंड, no shares are being held by parent and therefore disposed subsidiary is not included in the group financial position. जब एक्वायर किया था, वी जब एक्विजिशन का टाइम था, इवन इफ यू आर एक्वायरिंग डे बिफोर ईयर एंड, बट एट द ईयर एंड वो हमारे ग्रुप में था, तो वी विल बी एडिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट जब डिस्पोजल की बारी आई एट द ईयर एंड, हम हमारा उस पर कंट्रोल नहीं था, वी वुड बी deducting all the balances of subsidiaries, ex subsidiaries from the consolidated financial statement. But in P&L, up to the date of disposal, 100% of the balances will be adding. Correct? Correct, right? Right. Yeah. Now gain calculation pro forma.
सबसे पहले सेल्स प्रोसीड्स, आई मीन सेल किया, कितना प्रोसीड्स मिला, उस दिन नेट असेट कितना था, डेट ऑफ डिस्पोजल के टाइम पर नेट असेट कितना था, नेट गुडविल कितना था, लेस एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कितना था। फॉर एग्जांपल हमने प्रोसीड सेल प्रोसीड जाएगा तो वो फॉर एग्जांपल 75 और 25 का रेशियो था, ठीक है। तो जो सेल प्रोसीड आएगा वो भी 75% का ही आएगा, राइट? करेक्ट। तो 75%, फिर हम नेट असेट भी ऐड कर रहे हैं, करेंगे, तो नेट नेट असेट कितना होगा, बेसिकली 75% ऑफ वॉट, 70% सेल प्रोसीड्स, एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, वो 25% पे होगा, ठीक है। लेस नेट असेट, ठीक है, लेस गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, फॉर एग्जाम्पल 100 आया, 1000, 250, नेट असेट भी था 750 का, गुडविल था 100 का, तो नेट कितना आया, नेट गेन क्या हुआ, दिस प्लस दिस माइनस, तो 400 इज द नेट गेन। वो जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट में, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। अगर बैलेंस शीट बनानी है तो रिटेनिंग में एडजस्टमेंट होगी, बट अगर दोनों बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर दो, तो बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली जब वो प्रॉफिट प्लस करेंगे, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, वो ऑलरेडी एडेड ही होगा प्रॉफिट, करेक्ट, प्रॉफिट ऑन गेन ऑन डिस्पोजल, तो वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। दिस इज द वे वी आर कैलकुलेटिंग। वन मोर लॉजिक, ये 75% है, 75% प्रोसीड्स, नेट असेट्स 25, तो इसका मतलब 100%, यहाँ तक 100% हो गया, ठीक है, 100%, राइट। अब हाँ। 100, नेट असेट भी 100% ही होगा, गुडविल भी 100% का ही पार्ट होगा नेट असेट्स का, तो 100% मतलब प्रोसीड्स प्लस एनसीआई लेस नेट असेट 100%, तो 100%, 100% माइनस करेंगे, विल गेट द टोटल गेन, करेक्ट। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सिडियरी, ठीक है। लेट्स read this note. Any tax on gain is calculated using gain in parent individual financial statement, ठीक है। एनी टैक्स, अगर कोई टैक्स पे गेन आ रहा है तो कैलकुलेट होगा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गेन के ऊपर, फॉर एग्जांपल। और हाँ, यहाँ पे कितना होगा, इन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल वी रिसीव्ड प्रोसीड्स ऑफ 1000 और नेट एसेट कितना था 750 का, तो इन सिंगल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गेन वुड बी हाउ मच, हाउ मच, 250, ठीक है। Within the FR exam, you may be required to deal with the disposal as a part of consolidated financial statement of profit and loss. आएगा क्वेश्चन, such a disposal is likely to be treated as discontinued operation. Where the disposal is not treated as discontinued operation, then the gain or loss should be presented as a part of operating profit. इसका मतलब अगर gain और loss IFRS 5 के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, बेसिकली IFRS 5 के कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखा देंगे। बट अगर IFRS 5 के डेफिनेशन में मैच हो गया, इसका मतलब वी आर अंडर IFRS 5, और IFRS 5 कहता है पीएनएल के नीचे शो करो प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, करेक्ट, एक्स एक्स अमाउंट जो भी आया। बट अगर ये डेफिनेशन में नहीं आता है, विल पुट इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट स्टैंडर्ड, वहां पे सेल की बात हो रही थी, यहाँ पे भी सेल की बात हो रही है, तो अगर वो डेफिनेशन में मैच हो गया
तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और वो कहता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नीचे कर, सिंगल लाइनर करके दिखाओ बिलो पीएनएल। हम्म। ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। रॉक acquired 70% of investment in dog for 2000 2 years ago. It is group policy to measure non-controlling interest as fair value at the day of acquisition. The fair value of an NCI in dog at the day of acquisition was 800, and the fair value of net assets were 1900. The goodwill has not been impaired. Rock disposed of all its share in dog for a proceeds of 3000. फेयर वैल्यू उस दिन था, फेयर वैल्यू क्या था, 2400 ऑफ नेट एसेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रॉक्स अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाएगा, दैट विल बी अंडरस्टैंड। राइट। ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द सेल्स प्रोसीड in individual, we just have to calculate sale proceed less carrying amount, we are done. Sale proceed was 3000, fair value of net asset कितना था, 2400, गेन कितना हुआ, 600। नॉट गेन, कैरिंग अमाउंट। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन been given, 70% 2 years ago इन्वेस्टमेंट था। ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट, डन। सेल कितना हुआ, मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, गेन मेरा 1000 है इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ऐसे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं, करेक्ट। कोई भी डिस्पोजल अगर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी होता तो कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ के कैरिंग अमाउंट कर देते हैं, करेक्ट। हेलो, हेलो। हेलो।
Hello. हेलो. So where we were, yeah, we were solving this question. In requirement is we are being asked to calculate our individual profit Hmm. in ROC's individual financial statement and Hmm. profit from consolidated financial statement. ठीक है? Right. In inv- sing in sing, single in standalone financial statement, how do we calculate? Simple sales, how much proceeds we have received, Hmm. लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने कितना इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे 2000 इन्वेस्ट किया था, प्रोसीड्स मिला 3000, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज 1000. Right. ठीक है. कॉम्प्लिकेशन कम्स इन सेकंड क्वेश्चन. रॉक्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट जाए, गेन कितना रिकॉर्ड होगा. तो व्हाट डू वी हैव टू डू, लेट्स प्रोसीड विद द सेम प्रोफॉर्मा. प्रोसेस कितना है, 3000. हाँ. What is the amount of NCI is been given in the question? NCI at the day of acquisition was 800. Net asset is given 1900. Let's put net asset at 1900 negative. ठीक है. Goodwill, good. Okay, net asset been given. Proceeds 2400 at the day of disposal, right? Goodwill is not being given, but we have given enough information to calculate the goodwill. ठीक है. Goodwill is what, purchase consideration. What is the purchase consideration? 200, 2000. 2000. Fair value of NCI is been given Oh, 800 less 1900. 800. 1900. There is no impairment. Okay, so 900 is the goodwill Yeah. and there is no impairment. So goodwill at the day of disposal will be same 1900. Hmm. Correct. अब we have to calculate NCI at the day of disposal. ठीक है. NCI at the date of acquisition कितना था, 800. 800. Now in question we have been given that fair value of net asset, मतलब net asset मतलब equity part, like equity and return earning. जब एक्वायर किया था तो रिटेन अर्निंग था 1900. जब सेल Hmm. किया तब रिटेन अर्निंग हो गया 2400. इसका मतलब 500 इज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. Oh. करेक्ट, राइट. Hmm. सो 500 into how much, what is the percentage of NCI? 30%. 30%. 150. 1. ठीक है. Yeah. और एक्वायर किया तब क्या वैल्यू थी, 1900, 800. 800. तो 950 इज द NCI एट द डे ऑफ डिस्पोजल. Yes. Right. ठीक है. तो गेन कितना आएगा, 650 is the gain that would come under statement of profit and loss.
Done. डन. Yeah. सब्सिडियरी. सब्सिडियरी हैज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. बेसिकली अभी हमने आई जस्ट टोल्ड यू कि अब अगर हम सेल कर लिया हमने, तो देयर माइट बी हाई हम्म. चांसेस कि वो आईएफआरएस 5 के केस में आ जाएगा. एंटिटी हेल्ड फॉर सेल, हाँ. राइट. तो अगर वो मैच हो गया हम्म. उस कंडीशन में, फिर तो वी वुड बी रिकॉर्डिंग बिलो पीएनएल एज अ सिंगल लाइन आइटम एज प्रॉफिट और गेन, बेसिकली गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ सब्सिडियरी, वो दिखाएंगे. अगर इफ कंडीशन, अगर वो आईएफआरएस 5 के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, देन हम ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको दिखाएंगे विद इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आई मीन इन पीएनएल. बट व्हाट दे आर सेइंग इन Right. द disposal of a subsidiary within the exam is likely to meet the definition. मतलब there are high chances कि उसे उसे you have to show as a single line item below profit and loss. हम्म. Correct. This would mean, what does it mean? That in the statement of profit and loss, the result would from the subsidiary would be presented as a single line profit or loss from discontinued operation rather than being consolidated line by line. Agree? Yeah. The profit or loss from discontinued operation includes any profit or loss on gain, although it's important to remember that non-controlling interest is only entitled to its share of any operating profit. ठीक है. What they are saying कि जो गेन होगा, दैट इज फ्रॉम सब्सिडियरी सेल, राइट. तो जो टोटल गेन है उसका एनसीआई का पोर्शन भी आएगा. करेक्ट ना. फॉर एग्जाम्पल इस ये हम्म. 650 में से 30% इज ऑफ एनसीआई. हाँ. इसमें तो बेसिकली 70-30 का रेशियो है, बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दिस गेन वुड प्योरली ऑफ ओनर्स. वाई? क्योंकि हमने प्रोसीड्स लिए दैट वर ऑफ 70%. हमने एनसीआई टोटल किया, वी गॉट 100% ऑफ द फेयर वैल्यू. कितना प्रोसीड्स मिला है एज पर मार्केट वैल्यू. टिल डेट हमारा एक्विजिशन, हमारा कैरिंग वैल्यू कितना था, नेट एसेट मतलब पूरा नेट एसेट 100%. तो हमारा गेन आया ओनर्स. ठीक है. बट व्हाट हियर दे आर सेइंग, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ओनली इंक्लूड एनी प्रॉफिट और लॉस डिस्पोजल ऑन डिस्पोजल. बेसिकली जो इतना प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वो सिंगल लाइन आइटम में शो होगा. ऑल्दो हम्म. ऑल्दो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज ओनली एंटाइटल्ड टू इट्स शेयर ऑफ एनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट. मतलब एनसीआई को कितना प्रॉफिट मिलेगा, जो जितना उतना उसका शेयर है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. इसमें 30% तो 30% शेयर ही मिलेगा. ठीक है. Right. और ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो फर्क नहीं पड़ता है. ऑल्दो इट्स कॉमन सेंस की अगर 30% इज ऑफ एनसीआई, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसका पोर्शन का ही जाएगा, क्योंकि हम खुद 70% ही ले रहे हैं, हम थोड़ी 100% ले रहे हैं. हम 70 और 30 में बाइफोकेट कर रहे हैं ना. हम्म. ठीक है. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेल. हैग हैज held 60% in malt for several years using the fair value method to value NCI. ठीक है. फुल गुडविल आएगा. क्वार्टर ऑफ गुडविल हैज बीन, अच्छा क्वार्टर, जस्ट टेल मी, अ क्वार्टर ऑफ गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड, इसका मतलब कितना परसेंट इम्पेयर हुआ. 1/4. करेक्ट No, करेक्ट sorry, one करेक्ट. by three. वन क्वार्टर इज 1/4. हाँ, 1/4. ठीक है. द ग्रुप year end is 31st December 2005. A disposal of this investment has been made on 31st October 2005 for sale proceeds of this much. Details are given below. फर्स्ट कैसे सॉल्व होगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू टेल मी. नॉर्मली ऐड कर देंगे. सिंपल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सीओआई.
प्रोसीड्स 10,000 है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000 हाँ दिया हुआ है, प्रॉफिट आ गया। हाँ हाँ। सेकंड We क्वेश्चन, need goodwill. सेम प्रोफॉर्मा विल बी यूजिंग। प्रोसीड्स कितना था? 10,000। नेट असेट एट डिस्पोजल Yes. कितना दिया हुआ है? 3,000। करेक्ट। Yeah. गुडविल वी हैव टू कैलकुलेट, और एनसीआई भी वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स कैलकुलेट गुडविल फर्स्ट। गुडविल में हाउ मच वी इन्वेस्टेड? 6,000। ठीक Hmm. है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डे ऑफ एक्विजिशन कितना था? 1,000। Okay. नेट एसेट एट द डे ऑफ एक्विजिशन कितना था? 2,000। 2000. तो कितना आया गुडविल? 5,000। 5000. But करेक्ट। और उसमें से impairment भी ऐड करेंगे. करेक्ट, इंपेयरमेंट भी ऐड करेंगे। इंपेयरमेंट कितना हुआ? 1/4. इंटू So 25%। 5000 तो और कैरिंग अमाउंट कितना हुआ गुडविल का फिर? थ्री सेवन फाइव into जीरो 3750. Yeah. 3750। गुडविल एट द डे ऑफ डिस्पोजल, इंपेयरमेंट भी आ गया, गुडविल आ गया। ओके। अब आते हैं एनसीआई पे। एट द डे ऑफ एक्विजिशन एनसीआई कितना था? सॉरी, नेट असेट 1000. 1,000। नहीं, नेट असेट 2,000 ना। एट द डे ऑफ एक्विजिशन नेट असेट 2000. Yeah, 2000. 2,000। और जब Disposal is 3000. डिस्पोजल के साथ 3,000। ठीक है। 1000 post acquisition. 1,000। बट वन मोर थिंग यू आर मिसिंग, व्हाट इज इट इज, एंड आई वांट यू टू गेस इट। परसेंट निकालेंगे. वेट थाउजेंड इज द वेट. 1,000 इज द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है। हाँ हाँ. तो One second. 1,000 We are इंटू, we are using fair value method ना तो यस यस यस, यस यू आर गेसिंग राइट। प्रपोर्शन में. तो 1,250 का इम्पेयरमेंट आया, उसका 40% विल बी बेयर बाय एनसीआई। करेक्ट। तो 2,000 प्लस दिस माइनस 500, 1,900। फेयर वैल्यू मेथड में वी इंक्लूड एनसीआई का इम्पेयरमेंट एज वेल. हम्म। क्योंकि वो क्योंकि जो गुडविल आई दैट इज फुल गुडविल ना। हाँ. हाँ, तो 900 इज द एनसीआई अमाउंट। ठीक है। सही. बस नॉर्मल सम। 11 प्लस 3,000, 4,150। करेक्ट। हम्म. 4,150 is the net gain। Yeah, we have calculated both standalone method and consolidated method। और ये कहाँ जाएगा? Just I'm testing you, where it will show if the gain uh, is not as per IFRS 5, then बैलेंस शीट में जाएगा. net gain ना। सॉरी, पीआरएल. और बैलेंस शीट और IFRS 5 के डेफिनेशन से मैच कर गया तो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सिंगल लाइनर बिलो P&L as profits oblique loss from discontinued
ऑपरेशन, अग्री। ये 4150 वहां पे शो होगा। Yeah. यू गेटिंग राइट क्या हो रहा है? Hmm. अगर IFRS 5 में मैच नहीं हुआ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे और ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग में भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ द ईयर जब हम ऐड करेंगे उसमें, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग डिस्पोजल का गेन ऑलरेडी एडेड है प्रॉफिट फॉर द ईयर में, तो रिटर्निंग भी एडजस्ट हो जाएगी। बट Yes. अगर IFRS 5 के हिसाब से मैच हो गया तो सिंगल लाइनर बिलो P&L दिखाना पड़ेगा। कैसे? फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 4150। ठीक है। Right. Yeah. ठीक है, देन वी आर डन विद आवर कंसोलिडेशन। फाइनली द बिग बुल इज बीन completed. A lot of tested understanding is pending. Few I try to solve within the sessions only for more better clarity. Rest you have to solve with your homework. Do let me know if Yeah. you have any doubts or anything you want to ask. Sure. Okay, then we are just left with our last topics: cash flow interpretation and earning per share. That will complete next week. Yes. Till then, goodbye. Thank you. Thank Bye. you. Bye.